Hey everyone, and welcome to Vimoh Live. This is a live stream slash podcast that happens on Wednesdays at 9:30 and Saturdays at 9:30. Today is Saturday. I'm slightly delayed, so I just skipped the intro and everything, and I'm here right away. I hope everyone can see and hear me. I hope the audio etc. is fine. Let me just check. Sorry about the delay. Not much of a delay, but still, yeah, everything is okay. And yeah, sorry, I'm 1 minute late. That's like a legendary amount of delay in my book. uh, what happened was that I had forgotten to share the link on Instagram, and so I was not here, but I'm here now. Let me quickly share the link to the live stream on the pinned link. Hold on. Let's see. Join via audio video. Shared. Chandranshu says boycott Vimo. Hold on, let me just pin this. It has been pinned. Pinned daan ho gaya. And now I'm ready. Let me read the comments. Okay. Yeah. You may be listening to this at a later point of time on Spotify, Google Podcast, Ghana.com, Geo7, etc. If you are, please leave a rating or a review of the show. If you want to support the show, please click the join button below and become a member of the channel. And if you want to support it on Patreon, you can do so at patreon.com/Vimo. If you want to make a one-time donation, you can go to my blog at vimo.stck.me and click the support button, or you can simply send money to Vimo at UPI. All the links and handles are in the description of this video, so you can check those out. Now to read some comments. Nazneen is here. Hi Nazneen. Awara Billah says share audio link already shared. Curiosity says Hiya. Krishna Shukla says hi. Hello to everyone who's new, by the way. Awara Billah says 1 minute late, boycott Vibo. Membership khatam, says Chandranshu. Uh, don't forget to click the like button. Yes, please. Everyone who's watching, please click the like button. And that's always a huge help. I'm a little out of breath today. I don't know why. But I have Battler in the video. Hi, Battler. You are on mute. Hi, hi, can you hear me? Yes, I can hear you. Go on. So, hi, how was your week? How are you doing? Your volume is very low, actually. Acha, I'm actually connecting from my laptop for the first time. Acha, so maybe sit closer to the microphone. Okay, now you're on mute again. Now? There's the same level of audio, actually. Okay, one minute, Hello? I'll connect through my phone and then rejoin again. So, I'll Okay, connect through cool, my cool, cool. phone and then rejoin. I can hear you now. Anyway. Now? No, it's okay. Connect through your Okay, phone. I'll just I'll connect to my phone, it's the best. yeah. So until he comes back, I'll take on Abhinav. Hi, Abhinav. सर आपको हिंदुइज्म के टाइम डायलेशन के बारे में क्या कहना है? हिंदुइज्म के किसके बारे में? टाइम डायलेशन वाला जो मतलब कॉन्सेप्ट कृष्ण है, ने हाँ, बोला मतलब था। हमारा हमारा एक दिन देवताओं के, हमारा एक साल देवताओं का एक दिन, या ऐसा कुछ होता है वैसा वाला? हाँ हाँ, हाँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बट इट्स नॉट ओरिजिनल बिकॉज बहुत सारे धर्मों में ये है एक्चुअली. और सर रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में क्या है, वो रशिया हार रहा है क्या? रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में बस इतना कह सकता हूँ कि आई होप इट एंड सून. पुतिन थोड़ा डेस्परेट लग रहा है, अपने सिटीजन्स को भर भर के आर्मी में भेज रहा है, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट वेरी वेल. यूक्रेन ये से जो एरियाज उन्होंने अनेक्स किए थे वो यूक्रेन ने वापस भी ले लिए. सो आई डोंट नो वेयर इट इज़ गोइंग. ऑल्दो कुछ लोगों का कहना है कि पुतिन कॉर्नर हो रहा है और इसका या तो एक अच्छा रिजल्ट हो सकता है विच मीन्स दैट द वॉर विल एंड, या तो एक बुरा रिजल्ट हो सकता है जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता. बट विल सी आई गेस. जब होगा सबको पता चलेगा. मैं कौन-सा दूरगामी व्यक्ति हूँ जिसको ये पता चलेगा कि आने वाले हफ्ते या महीनों में क्या होने वाला है. ओ, अच्छा दैट्स इट. हाँ ओके, थैंक यू. देन देयर इज़ आवारा बिल्ला. हाय. हेलो भैया, आवाज आ रही है? आ रही है पर थोड़ी वॉल्यूम लो है.
अब आ रही है आवाज भी थोड़ी इधर। हाँ 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 so by the way, wasn't it weird कि like अभिनव पिछले स्ट्रीम में आया, he asked about कलयुग and then he left and today happened the same. अभिनव हर हफ्ते आता है, कुछ भूमिका नहीं बनाता, सीधे पॉइंट पे पहुंचता है, सवाल पूछता है, जवाब जो मिलता है सीधे चला चला जाता है, जाता बाय बाय भी नहीं बोलता। इट्स वेरी वियर्ड। है। I बट mean, दैट्स ओके क्या एक्चुअली, इट्स होगा? क्वाइट एफिशिएंट, आई लाइक इट। But I don't think so. Like that will change his mind also. I mean, he is looking for validation. I guess so, according to हाँ, me. नहीं चलेगा, एज़ लॉन्ग एज़ ही इज़ नॉट लाइक इफ ही इज़ आस्किंग समथिंग, आई विल ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, उसमें क्या है? Yeah. So coming to the point, I have actually two questions. One हाँ, about writing science fiction and one about some sort of politics. So, what do you have like your opinion about the conversion happen in Delhi? I guess 2 दिन पहले हाँ, हाँ, हाँ। where ten आई thousand थिंक Hindus को कल हुआ या yeah, परसों हुआ? परसों हुआ था। परसों हुआ हाँ, था? अच्छा, अच्छा। नवरात्रि के दिन हाँ, विजयदशमी मुझे लगा से। परसों अनाउंस हुआ था और कल हुआ था। ना 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 इत परसों इसमें हुआ था। इसमें इसमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं एक्चुअली। एक, इसको जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज़ कर रहा था वो आम आदमी पार्टी का है। हाँ, वो मैं नाम भूल रहा हूँ बट हाँ। हुँ। दूसरी Yeah. बात ये है कि मतलब लाइक माय व्यूज़ अबाउट दिस आर वेरी क्लियर। एक समय था कुछ महीनों पहले जब मैं कहता था कि कन्वर्जन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, धर्म तो सिंथेटिक होते हैं, वगैरह-वगैरह, और मैंने एक पोस्ट भी लिखा था इंस्टाग्राम पे जिसके ऊपर कुछ दलित, बहुजन, आदिवासी लोगों ने कमेंट दिया कि है साले तुझे कुछ नहीं पता, धर्म बदलने से बहुत कुछ बदलता है, हमारी लिविंग कंडीशंस में सुधार आता है क्योंकि हम एक ऐसे धर्म में जाते हैं जहाँ हम इक्वल ट्रीटमेंट पाते हैं, और मुझे लगा हाँ, ये बात तो I would सही है। agree. Like it is a या, form या, of protest, I guess, and या, also या, like या, या, family में काफी होता है. Like I या। belong to Dalit community. हुँ। So हम लोग मान रहे हैं बुद्धिज्म, बट लाइक मैंने देखा है कि लोग एक साइड में बुद्धा की मूर्ति है, एक साइड में विष्णु की मूर्ति है, दोनों को साथ में पूज रहे हैं। हाँ, सो लाइक हाँ, चेंज होता है। बट हाँ, हाँ हाँ, वो राजेंद्र पाल गौतम था जो आम हाँ। आदमी पार्टी के थे, और तो आम राजरतन। आदमी पार्टी का इसको ऑर्गेनाइज़ करना मुझे थोड़ा मतलब लाइक आम आदमी पार्टी इज़ अ पार्टी दैट कंप्लीटली आई मीन उन्हें स्ट्रेयज अवे फ्रॉम ऑर्गेनाइज, ऑल दिस। आम आदमी पार्टी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, वो आई ऑर्गेनाइज नो, किया था वो पर तुम ये सोचो ना, राजरतन आम आदमी बेल्ट ने पार्टी किया जिस प्रकार की पार्टी है, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार की पार्टी है, क्या ये अरविंद केजरीवाल की अनुमति के बिना हो सकता था? था। आई मीन नहीं, उन्होंने कराया नहीं था, वो तो केवल आए थे जो राजेंद्र पाल गौतम थे, सॉरी। वो तो हाँ, पर काफी उनकी टाइम। उनकी पार्टी की छत्र छाया में हुआ ना, दिल्ली में हुआ, और पार्टी का दैट्स द डायरेक्टली थिंग, कोई, देखते हैं कि या केजरीवाल कैसे इस पे रिएक्ट करते हैं। एग्ज़ैक्टली, आई मीन केजरीवाल को रिएक्ट करना हो तो अब तक कर चुका नो होता। एनीथिंग। मुझे लगता है कि हाँ, केजरीवाल इज़ आई थिंक टेस्टिंग द इट्स अ ग्रेट वाटर्स। विन फॉर अस। या या। सो आई थिंक जो हुआ वो तो बहुत अच्छा हुआ। पर हाँ किस वजह से हुआ, किसने किया और किस इंटेंशन से किया, इस बारे में मैं अभी भी अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, सो आई मीन ये तो द अगर आप द देखोगे तो ये काफी टाइम से चल रहा है कि लाइक जितने भी एटलीस्ट जो बहुजन कम्युनिटी के लोग हैं उनको कन्वर्ट कराना है बुद्धिज्म। इट्स अ फॉर्म ऑफ हाँ, प्रोटेस्ट हाँ, या एंड एग्ज़ैक्टली। आल्सो स्पेसिफिकली न्यू बुद्धिज्म और व्हाट वी कॉल्ड अम्बेडकराइट बुद्धिज्म। वे लाइक हुँ, जो स्यूडो साइंस वगैरह जो बुद्धिज्म में घुसा है, हुँ। आई पर्सनली थिंक्स इट्स अ फिलॉसफी। वो लाइक तो देखो ख़ैर जो देखो, ये पता है, सपोज़ मैं किसी की बात मान लेता हूँ कि इट्स कोई एक आर्ग्यूएबल। धर्म है। सॉरी? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये आर्गुमेंट एक चल सकता है कि इट्स इज इट अ फिलॉसफी और अ रिलीजन, बट आई हाँ, नहीं, सी। मैं तो उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता। मेरा पॉइंट ये है कि कोई रिलिजन अगर कंप्लीटली पीसफुल है भी, और तुमने उसमें बहुत सारे लोगों को एक अच्छे इंटेंशन से लाया, जैसे ही तुम गायब हो जाओगे, कोई और आएगा और उसी रिलीजियस सेंटिमेंट का इस्तेमाल किसी और काम के लिए करेगा। सो रिलीजियस सेंटिमेंट इज़ वेरी पावरफुल, बट इट इज़ नॉट अ रिल इट्स लाइक अ ड्रैगन जिसको एक बार रिलीज़ कर दिया, मतलब तुम वापस पकड़ नहीं सकते। अगर बट तुमने यहाँ ड्रैगन को अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए भी रिलीज़ किया है ना, तो भी एक समय आएगा जब ड्रैगन के ऊपर तुम्हारा पूरा कंट्रोल रहेगा नहीं और तुम्हारे ऊपर आग छोड़ना शुरू कर देगा। और ये मुझे लगता है कि हर धर्म पे अप्लाई होता है। बट हम अगर आप इसे म्यांमार में देख चुके हैं, हाँ, बुद्धिज़्म का म्यांमार और परवर्ज़न। इवन थाईलैंड में आप देखोगे हाँ, बुद्धिज्म हाँ। लाइक दे आर वेरी व्हाट वी सो होमोफोबिक। लाइक अगर आप वहाँ पे वो जाओगे तो तो आप या वहाँ पे मैं किसी एक्चुअली स्पेसिफिक इमाम में कह रहे हैं कि वी किसी सपोर्ट हेटेरोसेक्सुअल फैमिलीज वगैरह, नौटंकी। या मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ पे नहीं जाना चाहता। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि इवन इफ समथिंग लाइक रिलिजियस सेंटिमेंट को हार्नेस करना, रिलिजियस सेंटिमेंट पता है, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो रिंग है ना, जिसके मैंने भी देखा पास वो रिंग आता है, वो कहता है कि देखा है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स? ना आई मीन देखा तो बहुत उसमें पहले, एक बट आई एम प्लानिंग। उसमें एक उसमें एक मैजिक रिंग है, जो कि जो भी पहनता है वो टेम्प्ट हो जाता है। मतलब हाँ, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, मैं इसका इस्तेमाल करके इवन बन दुनिया जाता को बदल। सॉर्ट ऑफ, राइट, थोड़ा थोड़ा नहीं, याद ईविल है। नहीं बनता, ईविल नहीं बनता। जो ईविल होता है उसको ईविल आइडिया आते हैं, जो अच्छा होता है उसको अच्छा आइडिया आते हैं। पर हर ओके हर किसी को ये आइडिया आता है कि ये एक असीमित अमाउंट ऑफ पावर है, इसका इस्तेमाल करके मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं हम अच्छी तरह से बदलूँगा, पर ओके। वो जो रिंग है, उसके पावर को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है। सो इट्स लाइक कैप्टन अमेरिका की जो सीरम थी,
अच्छे को अच्छा बनाएगा, बुरे को बुरा और बुरा बनाएगा, राइट? नॉट एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ न्यूक्लियर वेपन. कोई सोचेगा मैं न्यूक्लियर वेपन से रिएक्टर बनाऊंगा, कोई सोचेगा मैं बॉम्ब बनाऊंगा. पर एट द एंड ऑफ द डे न्यूक्लियर एनर्जी इज गोइंग टू बी डेंजरस टू एवरीवन, हाँ, राइट? दैट्स बट आई या. मीन लाइक सीइंग हियर सिनेरियो, लाइक अगर आप देखोगे जो अपर हम्म. अपर कास्ट कम्युनिटी, उनके पास सपोर्ट है, जो हम्म. क्रिश्चियंस है उनके पास सपोर्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जितने भी हम्म. क्रिश्चियंस हैं. हम्म. मुस्लिम्स के साथ सेम है, जैन्स एंड सिख्स आर वेरी फाइनेंशियली स्टेबल, आई वुड से, राइट? हम्म. हम्म. बट दलित के पास ऐसा कुछ नहीं है आज, दलित और I साइड know, which is why I said this is a great idea. Which is why I keep saying या that like people leaving a religion that dehumanizes them is always a good idea. Because मैंने एक पोस्ट में लिखा था इंस्टाग्राम पे आज कि अगर तुम एक कंपनी चला रहे हो और तुम्हारे एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं और तुम सुबह से रात तक इस बात का रोना रहते हो कि अरे उस कंपनी में चलेगा, उस कंपनी में चलेगा, उस कंपनी का गलती नहीं है. तुम अपने एम्प्लॉयज को खुश नहीं रख पाए, उस बारे में सोचो. अगर रख पाए होते तो वो जाते थोड़ी. अगर हाँ, तुम जैसे चाहते हो कि तुम्हारे एम्प्लॉय रुकें या फिर लौट के आएँ, तुम्हें अपनी कंपनी पे ध्यान देना होगा. हाँ, लाइक इसमें मीम्स भी बनते हैं, लाइक काफी जैसे चड्डीज होते हैं, कहते हैं कि 2 बैग ऑफ राइस के लिए चले गए. तो हाँ, उसका तो उसका सोचे ना उन रिस्पॉन्स चड्डी मिलता को है कि पूछना तुम्हारे चाहिए, अच्छा एम्प्लॉयमेंट को डिप्रेस किया तुमने कि 2 राइस के लिए कैसे भीग गए वो लोग. नहीं उन चड्डीज़ को पूछना चाहिए, तेरे को 2 बैग राइस दूँगा तो जाएगा? अगर वो ना बोलेंगे, तो उनको बोलना चाहिए, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि तू इस धर्म में खुश है. You या don't need to go anywhere. That whatever incentive people are giving people to convert, A, in most cases it's not even true, and B, even if it is true, so what? If someone is starving and you are not doing anything for them and someone else is doing something for them, can you blame them? उसको क्या करना चाहिए था? उसको बैठ के मरना चाहिए था यहाँ पे? बिल्कुल, बिल्कुल सही अजीब है. अजीब उनके आर्गुमेंट है. पर्सपेक्टिव से सही है. ऑल्दो दे आर लाइक गोइंग फ्रॉम वन सुपरस्टिशियस रिलीजन टू अनदर, बट लाइक Yeah. एट लीस्ट उनका जो कंडीशन है, लिविंग लिविंग कंडीशन है, फॉर अ टेम्परेरी मोमेंट वो बड़े इंप्रूव होगी. Yeah, वो तो मैं yeah. मतलब कहूँगा. बट हाँ, सो ये और ऑल्सो लाइक लाइक कमेंट्स, लाइक आपने देखोगे एक आजकल काफ़ी लाइक आई डोंट नो मैं वर्ड कह सकता हूँ कि नहीं, बुराई होती है सॉर्ट ऑफ साइंस जर्नी. डू यू हुँ, लाइक हुँ, 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 इट? एक दो बंदे आते हैं, आई डोंट नो क्या नाम था, अर्जुन आचार्य वगैरह वगैरह. हुँ, सो आई वुड से ही इज अ लिटिल अप्रोचिव, कि लाइक छोटी चीज को वो बंदा लाइक खींच लेता है, बट लाइक वो काफी स्पेसिफिक चीजें पॉइंट आउट करता है. लाइक जो बुद्धा एंड दिस धम्मा की जो सबसे फेमस एडिशन है, इट हुँ, वाज वो पाली भाषा में, जो पाली प्राकृत में से जब उसको क्या कहते हैं ट्रांसलेट किया गया हिंदी और इंग्लिश में, तो एक बंदे के पास किया गया जो बंदा अपने आप को वेदांती कहता था. हुँ, हिंदुइज्म लाइक कंप्लीट हिंदू मतलब बंदा हुँ, था. एंड फिर हुँ, उसको लाइक पूरा स्प्रेड वगैरह किया गया और ऑल ओवर द वर्ल्ड. और फिर उसी को लेके बोलते कि देखो यार, इसमें भी तो लाइक सुपर साइंस, सॉरी, स्यूडो साइंस वगैरह है, ऑल दैट. हुँ. आई वुड से कि लाइक ऐसे हैं तो या तो आप साइंस जर्नी को देखते हैं क्या? लाइक पर्सनल क्वेश्चन. कभी-कभी देखता हूँ, कभी-कभी नहीं देखता हूँ. आई डिपेंड मीन करता बट है, टाइम है या नहीं. मतलब मैं उतना रेगुलर व्यूअर नहीं हूँ जितना कि हो सकता है कुछ हाँ, और लोग हों. थोड़े लंबे लंबे लाइव स्ट्रीम भी करते हाँ, हैं हाँ. लोग विद साइंस. 7-8 घंटे का लाइव स्ट्रीम को 7-8 घंटे का लाइव स्ट्रीम 7-8 घंटे का लाइव स्ट्रीम मैं तब देख सकता हूँ अगर मैं पूरी रात जागने का प्लान बनाया हुआ. मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे जागना है, तो मैं प्ले करके छोड़ दूँगा और अपना काम करूँगा. पर मैं 10:30-11 के आस-पास सोने की कोशिश करता हूँ, सो इसीलिए नहीं हो पाता. हाँ, सो बट मतलब ये मैंने चीज़ देखी है, लाइक जब इवन लाइक जो एथीस्ट वगैरह हैं, लाइक मैं सर्वर हुँ, में भी देखता हूँ, थोड़ा आर्ग्यू करते हैं कि ठीक है ना, लेकिन अभी फर्क नहीं पड़ता है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में चले गए. हुँ, लाइक इसलिए फिर बाद में वो बोलते हैं कि यार हम लोग जा रहे थे बहुजन मूवमेंट में ज्वाइन करने के लिए, कि हमसे बोलते तुम समझते नहीं हो बात को. उन्हीं चीज हुँ. समझ में आती है कन्वर्जन के बाद आपकी जो कंडीशन कैसे इम्प्रूव होती है. या तो आजकल ये बात मुझे पता नहीं चलती थी. मैं पहले कहता था कि कन्वर्शन से कुछ नहीं होता, कि मतलब कन्वर्टिंग फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम, इस्लाम टू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी टू बैक टू हिंदुइज्म और ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, इट डजंट चेंज एनीथिंग. बट मुझे किसी ने कहा कि बिकॉज़ यू आर नॉट फ्रॉम अ दलित बहुजन आदिवासी बैकग्राउंड, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट दिस मीन्स फॉर अस. उसके बाद मैंने सोचा इस बारे में, मुझे लगा सही बोल रहे थे. मैंने आई मीन मूर्खों जस्ट जैसी बात सपोज की कि थी. लाइक 15 साल का बच्चा था, लाइक ही वाज लाइक बिलीविंग इन ऑल या हिंदू या या गॉड्स एंड गॉडेसेस. उसको मान लो या फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया गया बुद्धिज्म में. हुँ, तो हुँ, एटलीस्ट ही इज लाइक फोर्स टू लाइक थिंक अबाउट दैट. हुँ. उसके बाद फिर वो बाद में बुद्धिज्म भी छोड़ दिया, या बुद्धिज्म छोड़े ना छोड़े एथीस्ट बन जाए, वो अलग बात है. लेकिन हुँ. वो एक चेंज ऑफ माइंड और फिर एक नहीं, फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट भी होता है. जनरली स्पीकिंग At the end of the जनरली day, स्पीकिंग जनरली स्पीकिंग मैं बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार की धार्मिक एक्टिविटी का के पक्ष में नहीं हूँ. नहीं, मुझे लगता है I कि know. अगर एडल्ट्स डिसाइड करें अपना धर्म बदलने का, तो दैट्स परफेक्टली ओके. बट देन अगेन मैं एक किसी बच कंडीशन है, बच्चे को ऐसा फोर्सफुली किया जाता है, क्योंकि वो चीज होती है, आप भी जानते हो, हर हर रिलीजन में. क्या इन केस अगर क्या है तो एटलीस्ट ही इज फोर्स्ड टू लाइक थिंक अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट 15 year child.
लाइक इतनी सोचने की क्षमता हो। हाँ, तो किसी भी धर्म में अगर किसी 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड के साथ ये होता है तो मैं उसको अपोज ही करूंगा। वो क्वेश्चन मुझे लगता है करेगा उस चीज को, और फिर बाद में अगर वो जो एग्जिस्टिंग नॉर्मली नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है। अगर आई मीन बच्चे को तुम किसी धर्म में ठूस दोगे ना, तो बाद में वो उस बारे में सोचने लायक रहेगा नहीं, क्योंकि वो उस धर्म के रीति रिवाज उसके जिंदगी का बहुत क्लोज हिस्सा बन जाते हैं। नहीं, मैं जब कन्वर्ट हो जाने की बात करूँ, जस्ट आप हम्म कन्वर्ट हुए हो, अब तक आप कुछ और किसी और को पूछते थे, अब आप किसी और को पूछ रहे हो, तो इसमें हम्म थोड़ा तो दिमाग लगाओगे ही भाई। फिर उसमें हम्म आप गलतियाँ निकालोगे पुराने वाले रिलीजन की, तो फिर सोचोगे यार ये हम्म मैं नए वाले रिलीजन में क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा ये पॉइंट था ओवरऑल। ओके और ओके। और अबेला, आपका एक और पॉइंट था ना राइटिंग के बारे में कुछ? राइटिंग के, यप मैं यप, सॉरी। आपको थोड़ा पुश कर रहा हूँ क्योंकि 5 लोग और जुड़ चुके हैं। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। सो हाँ, बताइए। मेरा एक थोड़ा आइडिया था, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि मैं हम्म एक ऐसी स्टोरी लिखना चाहता था कि लाइक, हाँ, मैं स्टोरी लिखना चाहता हूँ साइंस, तो आप मतलब मैं स्पॉयलर्स या जो भी कहें बताऊंगा, हम्म लंबा टाइम चला जाएगा। अपना आइडिया पब्लिक में बहुत डिटेल से मत बताओ, दैट्स व्हाट आई विल से। अच्छा, तो मतलब शॉर्ट में बता सकूं, क्योंकि 1 मिनट 1-2 मिनट तो लगेगा एटलीस्ट। दैट्स अप टू यू, इट्स योर आइडिया, इफ यू वांट टू एक्सपोज इट टू द वर्ल्ड, हु एम आई टू स्टॉप यू? आई मीन नहीं, मैं टाइम की बात करूंगा मैं तो 1-2 मिनट में शॉर्ट में बताऊंगा। हाँ ठीक है, शॉर्ट में 1 मिनट में बता दो। हाँ, सो मेरा ये मतलब थोड़ा ये आइडिया था कि लाइक ह्यूमैनिटी वगैरह, इट इज़ अ साइंस फिक्शन स्टोरी। सो हम्म हम लोग एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं कि हम अब इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं थ्रू टेलीपोर्टेशन, नॉट डायरेक्टली हम्म एक जगह हम्म से दूसरी जगह शिप में जा रहे हैं वगैरह वगैरह। एंड ओके फिर हम एक ऐसे सिविलाइजेशन को एनकाउंटर करते हैं, हम्म और वेरी लाइक काफ़ी मतलब अच्छे हैं, और मतलब काफ़ी जैसे हम लोग आइडियल एलियंस को देखते हैं कि भाई वो घुल मिल रहे हैं, अच्छे से बात वगैरह कर रहे हैं, तब हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में एक सिविलाइजेशन थी, लाइक हम्म दे वर द फर्स्ट वन। उन्हें हम्म नहीं पता चला कि गॉड क्या है, वो क्या है। हम्म तो वो अपना चीज़ें जैसे हम लोग आज करते आ रहे हैं वो करते गए, फिर एक टाइम के बाद वो इतनी ज़्यादा मतलब साइंटिफिकली डेवलप्ड हो गए कि वो हम्म हर लाइक प्लैनेट्स में जाके अपनी सिविलाइजेशन बढ़ा रहे थे। हम्म हर प्लैनेट्स पे जाके ह्यूमंस को लाइक रिप्रोडक्शन एंड ऑल दैट समझ गया वगैरह। समझ गया समझ गया, हाँ। हाँ, और फिर उनको आपस में कनेक्ट करते जा रहे थे। हम्म एंड फिर हम लोग एक ऐसे स्पेशल केस थे जहाँ पे हम लोग को लाइक स्टार्ट तो कर दिया लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। सो देयर इज अ अच्छा, होल अदर सिस्टम कि वहाँ पे हजारों प्लैनेट्स वगैरह आपस में कनेक्टेड हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग एंड और शेयरिंग गॉट इट। वगैरह। अगर बिल्ला, आइडिया तुम्हारा अच्छा है एंड आई डोंट नो, लाइक आइडिया के बेसिस पे कभी भी कहा नहीं जा सकता स्टोरी कैसी होगी, एग्जीक्यूशन नहीं, पे मैं पूछ डिपेंड रहा था करता है। वो बात पर मैं तुमको एक एग्जीक्यूशन एडवाइस दूंगा। कैसे एक करेंगे। सीरियल है, एक सीरियल है बहुत पुराना, उसका नाम है स्टार गेट। देखा है तुमने? हाँ, नो। देखो उसको, ढूंढ के देखो, तुमको काफी सिमिलरिटीज मिलेंगी, सो दैट यू एक्सीडेंटली डोंट डू थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डन। माय ठीक है। आइडिया वाज लाइक कि हम लोग सोचते थे कि वी आर यूनिक, कि हम हाँ। इकलौते हैं, और हम जाते तो हमें पता था वी वर अ मिस्टेक। हम एक छूट गए हम्म थे कम्युनिकेशन लाइक कनेक्शन वगैरह नहीं किया। हाँ मैं हाँ। पूछना चाहता कि इसको स्टार्ट कहाँ से करूँ, मेरे कुछ। इस आइडिया पे बेस्ड 2-3 चीज़ें हैं जो तुम देख सकते हो। एक है हेलो। हेलो जो वीडियो गेम है ना, उसके ऊपर एक सीरीज़ बनी है जो कि अभी शायद वूट पे अवेलेबल है। और एक सीरीज़ है स्टारगेट, जो कहाँ अवेलेबल है मुझे पता नहीं, पर तुम उसको ज़रूर देखना, तुमको अच्छा आइडिया मिलेंगे। और हो सकता है तुमको चीज़ें अवॉइड कर सको उसके ज़रिए, उसके उसको देखने के बाद। नहीं, मेरा वो क्वेश्चन नहीं था, मेरा वो तो ऑब्वियसली मैं देख लूँ, मैं मतलब स्टार्ट कैसे करूँ, लाइक आई हैव नो जीरो आइडिया अबाउट राइटिंग साइंस फिक्शन और एनी स्टोरी। मैं आई डोंट पहले नो व्हाट यू आर आस्क आई डोंट लाइक नो व्हाट यू आर आस्किंग मी। मैं स्ट्रक्चर लिखूँ पहले, या मैंने पहले उसकी अच्छा कोई। वैसे, हाँ, आउटलाइन लिखो पहले। अच्छा, उसके बाद फिर हम ये अपना। हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उसके बाद एक-एक चीज़ को एक्सपैंड करो। ओके ओके ओके। या अच्छा, आप चले ही गए। गलती से चले गए या जान के चले गए पता नहीं। बट सो cinephile, you are in the queue but your devices are not connected. I don't know why. Maybe you want to go and come back. Until then, I'll take Battler. Battler? Hi, can you hear me now? Yes, I can hear you now. Go Hello? on. Yeah, Yeah. anyways, sorry, it's a bit rainy here, so the connection might be weak. Acha, Hi. So, acha. anyways, I'll not take much of your time. I just want to ask you like maybe three short questions. So, you were a TS in the past, right? I was a theist in the past, yes. Yeah. So, anyways, actually, I've been fascinated by the decline of organized religion in the Western Hemisphere, and Hmm. just trying to figure out the differences between why certain forms of religion are succeeding in those countries, and while others are not succeeding, and while others are succeeding elsewhere but not succeeding here. So I mean, so one of the things that, so just a couple of questions regarding that. So one of the things that
I have honestly, like, the most fascinating thing is, seeing these people who are now were formerly, say, Christian or Hmm. atheist or something like that, and have Hmm. now, become pagans. So in other Hmm. words, they like literally worship, or these ancient Greek gods. And I mean, Yeah. I mainly go to Reddit, and I mean, like, some of the descriptions are very fascinating. Like, many people actually believe that, these people actually talk to them. So that whole meme is that an imaginary friend, or a Hmm. religion is like just speaking with your imaginary friend. So that's like seeing it in reality. So did you ever feel something like that when you were a TS? Because I mean, I Yeah. was Yeah. never Yeah. really that religious at all. So Yeah. like I you did. actually thought that Krishna or Ganesh was speaking with you. Like No, how no, did no, it not sound that like? way. Not that way. Huh. I thought that there was order in the universe, and that Hmm. there was some kind of consciousness guiding the universe, and that consciousness Hmm. sometimes sends us messages, and those messages come to us in the form of coincidences, which was a woolly spiritual kind of shit. Huh. But that was the Yeah. extent of it. Okay. I never thought that these gods actually existed in physical form. No, that's the one thing, because these guys literally seem to believe that they're talking to people. So I just want to know if that's something that all TS feel, or is it just very unique to these guys' circumstances? No, I think it's And unique to person because I don't think there's anything that all theists feel, which is why I kind of hmm, resist the urge to paint all theists in the same light because every single one will have a different definition of God or religion or something. Every time you make a video about some kind of yeah, nominal concept, there'll be four people in the comments saying, no, that's not what it means. It means this. hmm, So it's one thing to make videos. When you're yeah, yeah, talking to yeah, people, you should yeah. always ask them what they No, I believe mean it's specifically. fascinating. So Yeah, go on. yeah, and then, yeah. So one other thing that I honestly I'm really fascinated by is this concept of utility. So Hmm. like how I at least have sort of long put religion in the same category as what we would put money in, or what we'd put our nationalities in. These are just lies that we Hmm. invest our time and effort Yeah. in order Yeah. to what do you call that, like live in this world. So unlike money or human rights or something, what at least what Hmm. religion I feel has to do in this present day and time is to really put time and effort into being viable, having some Hmm. utility. So for these guys, the ones who talk to their imaginary friends, I don't want to be derogative, just Hmm. saying that way, is that they really do get some psychological benefit out of it. And Okay. and I mean, see, at least that sort of explains why certain forms of religion are succeeding in India and Africa, or certain countries in South America, but are dying elsewhere because the dominant forms don't have any utility anymore. So do you feel that that is the reason why, despite everything, despite Science Journey and Human with Science and Tarkashil Bharat and all these wonderful atheist voices who have sort of started, right, it's still like just sort of taking a bucket out of an ocean when a giant river is sort of flowing in. So, like, do you think that because religion still has a lot of utility, there's still something that people may get out of it over in comparison to what So they may it not have depends without it? on it depends on two things. It depends on the person who's religious, and it depends on the kind of utility you're talking about. So, for example, someone who has been Hmm. brought up in a very strict Christian Yeah. environment might find it suffocating. So, when they encounter an Eastern religion, they find, Hmm. oh my God, this is so liberating, and there is no sin, there is no hell, etc., Yeah. etc. I will go for this thing. Yeah. Yeah. Similarly, someone who has spent their Yeah. life in a Yeah. non-theistic religion will find that they are in may find that they are in need of some kind of compassionate god, so they might move towards Christianity or Islam because that is what the PR for those religions says. So I guess it depends on the person. I don't know if there are any studies Hmm. about the widespread nature No. of why an entire group moves in a certain direction, and I don't want to comment on that. But as far as utility is concerned, I suppose it depends on what the No. meaning No. of I'm. utility is. Yeah. Yeah, go So on. when I mean utility, I mean something that gives you some psychological, social, or even material benefits. So, for example, in India, your religions Hmm. are tied to the. See, here in India, your religions are just a sort of way for you to be socialized into your caste background, and your castes are That's increasing. true. And more than the religion, Yeah. I believe the caste is what is really keeping it alive. Yeah. So Yeah. like the reason, like, it's your caste that'll get you into a government service. It's a caste that'll get you into parliament. And I mean, see, I'm a Christian, so I know very well that if I was not born a Christian, I probably would not have gotten the education that I had,
right? Hmm. So, there's like a very strong benefit over here. Something else I've also Hmm. found out is how, because, like, see, because your Christianity in India, unlike over there, doesn't need to depend on, I mean, it has caste to sort of keep it alive, right? It doesn't need to go full in on the guilt. Like, that's the one main thing I find interesting. How horrible, religion has really affected people's mind spaces where they really seem to have, been taught to hate themselves. And Hmm. that, I mean, see, I've been around very religious Christians, I've been around very religious Hindus, I've been around very religious Muslims. I mean, see, this kind of thing where religion is something that just is shoved down your throat and makes you do things that you don't want to do is very rare. And I mean, now the reason, of course, is because you're actually following the tenets is not something that I find is very important. It is more Hmm. important that you participate in Are you communal saying? activities. You go to church, you go Are to you saying, temple. Yeah, Battler? Are you saying that people yeah. who do things in the name of religion don't want to do them, but religion makes them do it? No, 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 no. I am saying that You're people saying that who, people like, want to see, do things, but then they blame religion. no, 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 no. What I mean to say is that in India, at least, my observation of the situation is that, like you don't care about the actual tenets. Like, if you ask a random Hindu or a random Christian or a random Muslim to Hmm. even say something basic, like what are the things the Bhagavad Gita talks about, how many books are there in the Hindu canon, how many Yeah. books are there in the Bible, who all are the commentators, they won't know the basic stuff. Because the form of Islam in India, the form of Christianity in India, Yeah. it essentially just depends on you to be part. It essentially just a way to create communities. It's not a way to sort of put forward a particular religious set of values. Okay, I'm not saying Yeah. that I think that people So who are see, religious I are think here's the religious, thing. but hmm, I think hmm, here's the issue. When you say that a religion is just a way to build a community, it tends to hmm, be something that the person who's trying to propound that religion might say. Because hmm, you can build a community around any idea. Abhi hmm, recently, Sandman, there was a series on Netflix, right? There was a community of hmm, serial hmm, killers. You can build a community yeah, around anything. I'm not interested in hmm, that. I think communities can be built around football clubs. If you're if you're hmm. saying that my religion is just a way to build community, I would be curious to know what those communities are based No, around. no, 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 no. I'm maybe not being clear. What I'm trying to say is that here, in India at least, religion is just a way to shore up the support for your caste or your tribe. So, for example, I mean, we were talking on Gujarat, so that's a good example. So there are these communities called Patels. So there are two kinds of Patels, Luwa and Kadwa Patels. I don't know which one is Hmm. which, but one of them sort of claims that we are descendants of love. The other claims that we are descendants of Kush. What was two Okay. sons of Ram. So Hmm. that's the idea. That's the role that religion plays in India. It just gives you your story, but it's not an important part. You take some parts of your religion to shore it up, but the rest of the parts you just remove it. So I don't think that's a I'm maybe trying to say universally that correct people who are statement to make. so-called religious in India are not. Battler, Yeah. battler, battler. Hmm. I don't think that's a universally No, correct it's statement for to make India about only. For everyone. India, not for No, everywhere even in else. India, I don't think even in India that is true. Some people Hmm. take the religion extremely seriously. Some people are as dogmatic as you would expect an evangelical Christian Hmm. from America to be. Muslims, Hindus, b- I I Hmm. don't think it applies to Parsis. But yeah, Hmm. I don't think it's possible to say that in India Yeah. religion is just Maybe, this no, thing. maybe the general trend at least is that way. Yeah. No, I don't think it is possible to I make think any no, but the general to come trend to any seems to be conclusions that about. for most people. No, you can say many people, but you can't say most people because then you're coming to Okay. some kind of numerical specificity. You're saying it's more than 50%, and I don't know if I'm in a position to make that kind of Hmm. a determination. But anyway, Butler, do you have another point? Anyways, okay. Maybe I'm see. Yeah. No, not really. Actually, just wanted to come and share these thoughts. Actually, no. But Okay, there's okay, one last thing I want to try. So okay. a few. I mean, I think this is just the last thing. So, this is about this is about essentialism. So I think you must have heard these things. Like whenever someone Ah, from a religion does something horrible, you know, yeah, and when shit really hits the fan after that, you have these people who say, "Oh, this guy is not a true member of a religion." And recently I've yeah. come across the other side of this thing where certain atheists or No true agnostics skirts or left people fallacy. who take the worst aspects and say, "Oh, this is the true and truth, and everyone else are just
Yeah, the no true Yeah, Scotsman fallacy. yeah, So, yeah, how yeah, do yeah. you think we should deal with essentialism when it comes to evaluating a religion? Because even something as simple as understanding what a religious book says, you have people who keep on adding their own interpretations in it, and surprisingly it's actually quite old, Got it. since the very I beginning of understood. some religions I actually, understood. where nobody I seems understood to have. your. I Yeah, understood how your do you question deal with better. that? I Hmm. think the best way to deal with it is that in the Hmm. general sense, essentialism can be useful sometimes, because imagine a caveman who finds a red fruit Hmm. somewhere, and he eats it and he falls seriously ill, right? He Hmm. almost dies. The next time he Hmm. finds a red fruit, he Hmm. generalizes. He can't Yeah. afford to give red fruits every chance, right? So he will do some Hmm. experiments, he will feed it to a cat or something, and then if the Hmm. cat does not die, he'll say, okay, I can eat this. So there is some evolutionary advantage to generalizing. There is a reason we generalize, because generalization has proven Hmm. useful in the past. Hmm. But as far as religion and social conditions are Yeah. concerned, essentialism के साथ deal करने का, I think the best way is that when you're talking to a religious person, talk to that person. Don't try to judge them on the basis of preconceived Hmm. notions. So even if you're talking to someone really from Hmm. a religion that you have never had a good experience with people from that religion, give them the benefit of the doubt for at least the first 10 to 15 Huh. minutes, and then point out, like, Huh. ask pointed questions, use the Socratic method. Maybe this person is entirely Hmm. different, maybe this person is exactly what you would expect, but maybe this person is somewhat different. Hmm. So treat personal conversations as personal conversations. That would be my advice. Okay. Thanks. 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 Thanks, Better. Thank you All for right, I'll coming just and leave. thank you for asking Yeah. questions. Bye bye. There is private chat going on. There is this guy called Wesley Lawrence Curry who's spamming and he's just spewing scripture at me from the Bible. He's in the chat here. Wait, let me just remove him. Yeah. He has been removed for spamming, by the way. No other reason. Uh, Chinmay. Hi, Chinmay. What's up? Hey, Vimoh, how are you doing? Good, good. What's up? So, do you consider yourself a communist? I consider myself a socialist. Communism, I Socialist? still haven't made up my mind. I see. And do you consider yourself a materialist? Yes. Can you define materialism? Materialism is the philosophical worldview that the world is primarily matter and that there is no evidence to support the claims of any kind of supernatural reality or spirituality. Okay. So, you consider matter to be the ontological primitive? I don't know what that means. So, it is the only thing that exists, matter? No, I'm saying ki all I know is material. I see. So, it's a limitation of knowledge. So, it's not a complete philosophy. It's uh, it's a it's an acceptance of the fact that all I know is material. If there is something else, then that will have to be proven when that will have to be accepted after it is proven to exist. I see. So, you are open to other possibilities. Oh yeah, absolutely. That's why I I do see. this live stream, man. Come and prove it to me. I see. No, no. I wanted to ask you about your views on the quantum mechanical facts that we've known for 100 years, where there is really no matter until you observe it. There is really no particle until I an don't think observation that's is a made. consensus. I think the consensus would be summarized by what Feynman said: ki if you think you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics. No, no, When no. we I'm do not. have I'm a not full talking. understanding of it, when we do have an understanding of it that scientists can have a consensus on, No, then I will say let me that be we very have a view specific. on it. Right Yeah, now, let all me we be. have is confusion because we don't understand the data that we are seeing. No, actually, that's that. Let me be very specific, right? So Hmm. the double slit experiment has been around for a very long time, and it's very Yeah. clear that until you observe the particle, it is in superposition across multiple Hmm. in multiple places, possibly infinite places in space. Possibly So meaning? You said possibly, which means you because don't, which means it's well, not clear. it's certainly in two places at once or three places at once. They've done No, the I think you're experiment with describing the multiple places. results of an observation. We don't know what that observation means actually. So the hidden variable theory has also been Yeah, so there are proven many wrong, right? theories. I don't So know so if the I don't know which one of them to accept as true.
I see. So I think what would be good is if you actually do the research on this. There's been a lot of, in the last 25, 30 years, there have been a lot of experiments to I get into have the. read some of the books. So tell me what exactly you came to talk about. Well, this is one thing. The other thing I wanted to tell people on your channel is to look at John Vervaeke's series on the meaning crisis, and I think On the what? that will on the meaning crisis. There is an Okay. entire series of 46 lectures where he gets into the meaning of ritual and how various religious thought or various thought in general has come about over a period of time. I think it would be very instructive. I see a lot of questions from your viewers about what is religion, or why is religion useful to people, or why people do paganism, things like that, right? And I think I don't remember that, those questions. Did you see them today in the chat? yeah, right now there was somebody talking about how they see paganism on Reddit, right? For example, and why it would be attractive. It Okay. just came up in the previous chat. Yeah. No, as So, I so said I, in the previous answer to the question, I suppose the attractiveness of paganism or monotheism depends on the person who's experiencing the attraction. That's right. No, I think that there's a wider sort of context as well, historical and anthropomorphic, that people will get from John Vervaeke's lectures. Okay. People who are analytical in nature. I think Cool. I will the add it to my list of things to watch. Did you have anything okay. else to add, Chinmay? Yeah, the other thing that I would encourage your viewers to look into is Bernardo Kastrup's analytical idealism. It is a recent We had a couple theory. of conversations last week about idealism. Would you like to talk about idealism? Yeah, I think I can talk about analytical idealism in particular, not just Describe it. What does idealism. it mean? So, analytical idealism is that it is a foundationalism. So, it's based on extreme parsimony, right? So, there's only one kind of substance. It would be useful if you use simpler words. What do you mean by extreme parsimony? So parsimony is okay. You might have heard of the term Occam's razor, right? Yeah. So essentially, what you want to do is you want to come up with the fewest possible assumptions, fewest number of assumptions, right? Because if you have a theory where you say, well, there's a quantum field, but we really don't know where that came from, so there must be something else before that, or you kind of have multiple things that exist at the same time, and that is less parsimonious than, say, one thing, right, that exists. So this is a This extreme would be in parsimony. the face of absolute ignorance, right? Because you would not need to have multiple theories about something if you do know what it is. Well, the philosophy of, in general, is even materialism, right? Everything that we do is speculative because there is no absolute truth. All truth is foundational No, I think there are certain conditional. things in material reality that can be verified and checked, right? That's right, but there's certain things in, say, conscious reality that can also be verified and checked. So, for example, For you can see example, that. For example, you can see that when people take psychedelics, right, they have very intense experiences, but their brain patterns actually go down. So the neural correlates of consciousness, which means that the correlation between your neural activity and your conscious experience, or the degree of conscious experience you have, is supposed to be, or was supposed to be, correlated. Like, the people would say that, well, if you have brain activity, that means that you're having an experience, right? So they would do MRI imaging and say, oh, he's having this experience. He's looking at a car right now, okay, so I see this in the brain. So that's called a neural okay. correlate. But what they actually found was that when you have intense experiences that take you to sort of a different level of whatever, where you lose yourself, for example, right, where you become you may have heard of DMT or magic mushrooms and things like that. What happens is that you have very intense experiences, but your brain patterns go down in magnitude. In fact, your Okay. brain stops So what do you working think that entirely. proves? What do you think that proves? That proves that the neural correlates of consciousness are false, right? So conscious experience does not No, it arise from doesn't. the It brain. proves that it proves that. So here's the thing. Suppose you're having an experience and certain patterns are noted in your brain. And then we associate those patterns with those things. And Correct. then that finding, that theory that this is how things work, is applied to a wide variety of things. And it is found to be consistent with that finding. And then you find something that is, how do I put it, which is
an aberration, right? This is a different thing from all the things that we have seen so far. Why would you simply not call it an aberration, and why would you consider it a thing that removes the validity of our understanding till now? It's like there is a tree with blue leaves, and I say this is a tree with blue leaves, and you say, oh, but I found one yellow leaf, therefore you're saying that this tree is full of blue leaves is false. Yeah, I Isn't think that what you're doing? You're that's taking right. one aberration which may simply be something we don't understand right now, and you are Right. using it to deny everything we know till now. No. You're right. Like we don't know anything absolutely, even materialism, right? But my point is that there are No. You're putting repeatable words in my experiments. mouth. You're putting words in my mouth. I did not say we don't understand anything about materialism. You said that. But no. You said that we don't know enough about the experiments yet. There might be something we don't know that can explain the double slit I said experiment. there might be. I said there might be. Correct. I did not say there is. Right. So if there isn't, then we have a big gap in the theory, right? So my point is that with this We have a experiment, for gap in the example, theory uh-huh. which may even be answered through materialism itself. Why do you think materialism is not sufficient for it? No, I'm not Because saying it it's has not not. proven useful till now. It's not because there's been 100 years of experimentation, right, since 1920. So what? Maybe it Yeah. will be proven in the 200th year. How do you know it won't? That's right. So then the same applies to anything else, right? Including this idea that No, consciousness because this is idea has no separate from brain. This idea has no background. Materialism It does. It does have a materialism has a Yeah. background whereby it has proven useful again and again and again, and therefore it is like if there is a guy who comes to my house every day and says, tomorrow I will bring you an apple, and he Uh-huh. brings me an apple every single day. Tomorrow I will expect him to turn up at the same time and bring an apple. Even if it doesn't come tomorrow or the day after or the day after, I will assume that okay, so maybe something has happened. He will come in due course of time, and he does come and he brings me 3 apples. So that is Right. materialism. It fails sometimes. It Mhm. fails to give us some answers. But every single time someone has said that materialism has failed completely and now we need an entirely different paradigm, there has been no foundation to it. No, By you're the way, right. can I ask Yeah. you what your qualifications are? Are you into are you a qualified neuroscientist or something? I'm not a qualified neuroscientist. I'm an engineer. Okay. I'm an Okay. electrical engineer by training, Okay. and I am a researcher in consciousness, physics, fundamental physics, and Okay. a few other cross-domain things. Was that a quantum explosion in the background? Yes, that was a huge explosion in the background. Yeah. No. I think this is a good thing to debate. But I think one thing I just wanted to finish my point by saying that Okay. just as Just finish this just point as and I'll have to move on to the next person, huh? Because there are yeah. a bunch of people Just waiting. as repeatable as the double slit experiment, there are repeatable experiments that show that the brain is not a source of consciousness, that consciousness is something else. And this has come out from Carl Jung's work. It's come out from philosophers like Nietzsche, Schopenhauer, all the No. way It to hasn't. John It Hume. hasn't. It hasn't. No, I no, think no, you're no, no, too. not I think you're not too Nietzsche. eager to come to that conclusion. Let me I don't. let me just I'm say, not saying that it is not possible for you to be right, but I think the yeah. confidence you have in this theory is unwarranted. That's all I will say. Well, we Chinmay, can thank you. debate. Thank you. I'll have Yeah. to move on No, to the next person. I I will. also don't think You're any. welcome to come back. You're welcome to Yeah, come yeah. back, but I have far too many people No, today to give you I more said time. most of the things I wanted to say. Thank you. Cool. Thank you. Bye bye. And before I move on to the next person, who is Agastya, I will just thank Milind Sonone for the 200 rupees super sticker. Thank you, Milind. A super chat, actually. Keep going and growing, Vimoh. Viewers, kindly join Vimoh for rationality. Thanks, Milind. Much appreciated, as always. Wait, there's a chat from someone. So I have Agastya and I have Abhishek Jha after that. Abhishek says he would like to answer the point that Chinmay just made, but hold on. Yeah, okay. So Agastya was talking to Wesley, I suppose. Yeah. Agastya, you're online. Bolo. Okay, man. First things first, that guy was totally technobabbling. I mean, we do Yeah, have I know. theories, and I mean, here's the thing. We actually do this thing with the probability well function to solve the coordinates of the particle and all that. I mean, he's not. I mean, the thing is, what the interpretation of those things. Okay, fine. We have this probability distribution, right? So the thing we are having issue with is, okay, fine. What does that mean? Does that mean that once we shine light on that thing,
will it collapse into one reality, or all these things are just going on in the many world interpretation, all that. I'm just giving a Hmm. theoretical map that gets technobabbling. He sucks. Okay, fine. Okay. That being said, Yeah, avoid talking about him and just get to the point. okay. That being said, what do you, do you think? What role do you think the schools today play in spreading rationality? Schools. Yeah. Hmm. I think the answer would be obvious, right? Schools are supposed to teach children critical thinking, and schools are Yeah. supposed to be. I think it would be a great idea because you cannot remove religion in its entirety from families. So schools, I think, can No, no, act as a I don't mean like school as in counterbalance. like school. I'm not talking about school as in the school as you and me know. School as an institution. Yeah, that's what I'm talking about. Yeah. But here's the thing: schools package whatever the society's values are, Hmm. and they sort of work like business, right? I mean, they create curricula based on the society's whoever is in charge value, and they spread to maximum possible people. Like, okay, fine. So if the maximum people in the certain vicinity are religious and irrational, okay, they'll peddle that thing. Because here's it. In my moral science, did you have this thing called moral science in your college No, school? fortunately, no. No. Unfortunately, we did. Okay. I had that Then bloody what thing for happened? fourth to eighth, I guess. I mean, here's the thing. I Hmm. mean, all these ridiculous stories. Okay, okay, some dude in the desert is arguing that okay, there is no God, and some tomorrow the next morning there are camel footprints, and the guy says, Hmm. okay, the camel just passed by, and he's like, okay, well, how do you know the only just camel footprints? How do you know that there is camel? And he's like, okay, there are Okay. footprints. Yeah. 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 It's Yeah. very, Yeah. very, So the conclusion they came to was what? Where did the camel come from? Like, was that an argument no, for God? it's not about camel. He's making the allegory and he's saying like, okay, so we are God's footprints and whatnot. Okay, we had this. Acha. Okay. Okay. Got it. Fair. Okay, so I'm just giving an example of how schools Okay. push the moral of morality So I think the of problem the here is that the majority. last time I was in school, it was what more than 25 to 30 years ago. So I don't know what schools today are like. If moral science is a subject that is more widely spread out, I hope it, like, moral science is a good subject to teach actually if you do it right. If you make it about the importance of human beings treating each other with empathy. But the moment it becomes about religions, then it's going down the drain. So I don't know if that is what But you here's meant the by your thing. question about But schools. here's the thing. Here's the thing Huh. I'm going to ask you. Isn't this whole dysfunction by default? Hmm. Don't you think that? What? It's not a glitch in the system. It's not a bug. It's a future thing. It's a feature. So no, when you say it's a feature, are you saying that it's a good thing, or are you saying this No, is no, no. what it was I'm designed saying to do? yeah, it's exactly what it's designed to do. Because here's the Okay. thing: we have this one person called teacher. I mean, who acts as Hmm. both parent, priest, and Hmm. a psychotherapist, right? Hmm. I mean, he simultaneously tells kids what's right and what's wrong. He has the ability to Hmm. shame them into tell them what's right and what's wrong. Hmm. And then on the same time, he has all the authorities the parent has from I don't know 9 to 5. Hmm. Don't you see that is the part of the problem? It's not just that no matter whatever school you go, you're just being subjected to the I don't disagree will with of you. this one I person. don't disagree with you. I think schooling as a system is problematic because it turns people into obedient servants, and that seems to be its primary purpose. But that's just Yeah. our school system, right? There are other school systems No, in no, the no, world where no. children Uh, children are encouraged to think and be critical and ask questions and all that. nah, man. Here's the thing. I mean, if you want to know about it, like read Deschooling Society by Ivan Illich. By who? Ivan Illich. Okay. What is it about? It's about deschooling. So he defines school as this institution which what you call it, which standardizes and certifies and turns the newcomers into this. He calls Hmm. schools as new religion, new churches, Okay. and I whatever they're don't pushing the new necessarily religion. I don't disagree with that. But my Yeah. question to you would be, since you seem to think that schooling is a net negative,
What is the alternative? Yeah, that's the thing. I mean, there are many ways, right? I mean, one thing Name we one. can do is libraries for one. Because Oh, here's the thing: in excellent 12th idea. century and 13th Excellent idea. century, Yeah. I mean, in 12th century and 13th century, in universities, the people they didn't used to just sit there. The teacher used to tell them, and the people used to don't take notes. They used to pick one topic or one text from ancient work, and they used to Hmm. read it. They used to argue about it. Is basically what PhD students do. Hmm. That's what important for critical thinking. That's Not a one great guy idea. telling I the love other. it. I love it. Libraries open to everyone, all books available to everyone, wise We people have roaming internet. around to help you with. We Yeah, yeah, have yeah. That internet, too. chat rooms, Yeah, subreddits, and we can yeah. all kinds of things. No, I Here's think the I thing. think some kind of a physical location is kind of important, because Yeah, we have all seen the uselessness of online classrooms. It doesn't really yeah. work out. And of course, in India, there are additional I mean, it's. hindrances in the I mean, path of here's the something thing. like It's that, not just because like look. Here's the thing. access. Because in online classes, it's still one guy talking, all of them listening, right? Yeah, yeah, It yeah. was an act. There was supposed to be an interaction. Do you think online class would be that boring? But then, if you are talking about a wild west of the internet, then what the child consumes without any filter will create more chaos because of our misinformation problem, right? That's the thing, right? I mean, we tend to think children as this innocent. The 5-year-olds are probably the best learners because they always ask questions. They keep nagging you. I mean, everything is That's the no, no. See, why, that's why. the thing. The misinformation problem is not simply lies on the internet. It's a well established, well designed system to drive people towards certain political conclusions. So a 5-year-old child may be very good at assimilating information, but he's probably not very good at telling the difference between I mean, I should. No, no, politically. Yeah, I'm just telling you. I mean, I'm not totally denying that these dangerous I know, I systems. know. I mean, I'm all not right. blaming you of that. I think overall, Yeah, the point that you brought up is a good point, and I do think that yeah, school system does suffer from this ek guru. Well, I have a huge problem with the guru shishya system, and the yeah. school I system mean, tends to be that's an the thing, right? I extension mean, of it. Sangis tell that. I mean, we had the best education system. They implemented that there. No, man, that's not the case, right? Yeah, That's not the case at all. Because here's the it's thing, not. Gurukula, even Yeah, still, then you have one teacher telling 40 people listening, yeah, and that too, they used to talk about the scriptures and whatnot. I mean, they aren't even allowed to think rationally. I mean, dissection of a cadaver was taboo till like I don't know some who was it in 1840s some doctor who dissected the first body. mm-hmm. Until So then, that's the thing. medicine was just guesswork. Yeah, guesswork and a lot of hints. A lot of hints, and practically, actually, quite bad for the people that it tried to I treat. mean, that's unfair because we did have plastic surgery even then, but that's a skill. We are talking Hmm. about the critical thinking and learning here. Okay. Agastya, do you have another point to make? Because I want to move on to the next Yeah, person. here's the There are thing. a bunch of No, people no, like waiting. I was going to say that the thing we were talking about, it Hmm. actually happened before Shantiniketan. Oh, yeah, absolutely. Shantiniketan happened, and in fact, America's liberal arts education system is based on Rabindranath Tagore's ideas. Uh, Not necessarily, because even in 1900s, there's this guy called Francisco Ferrer, right, in Spain. I mean, he was not, I'm not saying Rabindranath Tagore created the entirety of it, Yeah, but I know. his ideas played a huge part in shaping what it is today. Yeah. There is a book Here's called the thing. Not for Profit by Martha Nussbaum. It's about the Yeah, importance of the humanities in today's age, yeah, how the humanities can save democracy. It's a nice mm, book to get acquainted with. But thank you, yeah. Agastya, for joining. I'll have to move on to the next person now. Okay, fine. See you. Chalo, bye bye. Right, the next person is Abhishek. Hi, Abhishek. Hi, Vimoh. Right. Hey, you Yeah, had certain I'd opinions come about our to, previous caller. yeah, I had come to talk about something else, but then I thought कि ये थोड़ा You address can do करना both. जरूरी है. You can do Yeah, both. yeah. So I'd like to address first this one, जो अभी हुआ, Hmm. जो अभी चिन्मय भाई साहब बोल रहे थे. The So technobabble he was stuff, quantum talking about, technobabble. yeah. So Huh. he was talking about the observer effect in quantum mechanics, and if you remember a bit, I also used that in last time we talked. To indicate something else, but he used Hmm. it to indicate something else entirely.
तो वो Yeah. एक एक्सपेरिमेंट है, and it happened I think in the Institute of Weizmann, Okay. something like that. And there were a bunch of scientists who used like a small device. Okay, it was a device that would detect how the electron was moving. Hmm. Okay, so that device was used as something which would detect the change in the electron as the device itself was observing the electron. Hmm. Could I make my point clear? Yeah, yeah, yeah. Got it. So the Yeah. observation you are saying was not actually done through human eyes. Yeah, it was not a human detector. Yeah. That is a very important point, Yeah, because yeah. people who want to take this to a spiritual dimension or something like that Consciousness want is to. not physical and all that. Is a like Yeah, and consciousness is the fundamental property of the universe, like Deepak Chopra says. yeah, he's the guy who does all the woo stuff. Nah, he's famous for that. Yeah. So this guy was exactly like that. So the detector was not human only. And if you Hmm. had to change the ability of the detector to observe, right? कि अगर आपको जो डिटेक्टर की एबिलिटी है ऑब्जर्व करने की इलेक्ट्रॉन की, Hmm. जिसकी वजह से ऑब्जर्व जो ये इफेक्ट होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है और मूवमेंट है और उसकी पोजीशन चेंज होगी, Hmm. राइट? उस ऑब्जर्वेंस की ताकत को बढ़ाना या कम करना डिपेंड कर रहा था उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाना या कम करने पे, Hmm. राइट? सो इट्स एंटायरली अ मटेरियल थिंग. इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद अस. The I think a lot of people use the observer effect in a completely different way, and I don't know. He's saying that he studies fundamental physics. I don't know what fundamental physics he studies, because he has to study it again for sure. So I mean, एक No, तो रिसर्च को we पढ़ना can बहुत avoid जरूरी है. we can avoid such comments. Just address the argument, not the person. नहीं, but the research has to be clear, ना? You can't just say Yeah. anything No, no, about I the agree with you. research. मेरा सायरन तभी बजने लगता है जब कोई सिंपल वर्ड्स की जगह कोई कॉम्प्लेक्स फ्रेज यूज करता है जो कि उसने किसी किताब में पढ़ा था. मतलब दिस पर्सन हैज नो इंटरेस्ट इन बीइंग अंडरस्टूड. दैट वाज माय फर्स्ट रेड फ्लैग रादर. No, he may और be a उसके बाद huge उसके बाद physicist. He सुधर may गया. be a big engineer. All respect to him for that. But he has to know the research of what he's talking about. If he Hmm. wants to make certain claims about whatever he's making, then he has to know the research. So I'm saying the detector which was placed there to detect कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा था और उसकी मूवमेंट के साथ क्या हो रहा था, उसकी Hmm. ऑब्जर्वेंस की पावर को बढ़ाने के लिए the electrical conductivity was being changed so that they could know for sure that Hmm. the observer, the electron detector was changing the position or the speed of the electron. Hmm. And you understood it, maybe the viewers didn't understand it. So ये No, मेरे no, को I एक think, point out करना see, था. here's the thing. Yeah. डबल स्लिट हम्म. एक्सपेरिमेंट को एड्रेस करने के लिए हमें कुछ और बेटर ये चाहिए क्योंकि दिस थिंग हैज बिकम पार्ट ऑफ पॉप कल्चर नाउ. इफ यू I लुक एट don't think कॉस्मोस. this is a double split experiment. Yeah. Split experiment is different. This was to I mean imply कि observance कितना बड़ा रोल प्ले करती है. जो Hmm. जो double slit experiment था वो actually कहीं ना कहीं I think dual nature of matter के बारे में था, right? Hmm. The wave nature of particle के बारे में ओके. था. अभिषेक, अभी इसके बारे में और बात करेंगे ना, ये सब सिर के ऊपर से जाने लगेगा मेरे भी और ऑडियंस के भी. सो हाँ, हाँ. तुम्हारा जो दूसरा पॉइंट था उस पे आ जाओ. दूसरा पॉइंट ये था कि बिफोर दैट हु वाज टॉकिंग, कौन बात कर रहा था? जस्ट चिन्मय से पहले कौन बात कर रहा था? मुझे याद नहीं है. The बैटलर guy who बैटलर was talking बैटलर. about, yeah, I wanted to address the point of Battler. So he said कि the psychological effect of the religion on us is important, I think, in some ways. And he's completely right on that. But he's saying कि he was trying to say कि the effect जो religion हमारे को help करती है psychologically, right? बट वो ये भी कह रहा था एट द सेम टाइम कि मतलब कुछ लोग इसको बहुत नॉर्मली लेते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं जाते. तो मेरा अच्छा. पॉइंट ये था कि इफ समथिंग इज एज पावरफुल दैट इट कैन मेक एन इफेक्ट ऑन यू साइकोलॉजिकली, राइट, इट मेक्स दैट यू आर टेकिंग द थिंग एक्सट्रीमली. एंड if the situations occur like that, that if you Hmm. have to take
your actions to an extreme point to protect that religion, you would do that. Even if you from the outside are seeing कि अगर आप सोच रहे हैं from the outside कि ये लोग तो normally रहते हैं, you know, अपने ज्यादा कुछ Yeah. लेते नहीं है, बस उसी कहानियों के बारे में बात करते हैं. But the fact that you see कि वो psychological effect हो रहा है, कि उसकी वजह से ही वो जी रहे हैं, that means itself if you would go to any length to protect it, if the situations And occur. it goes Yeah. beyond psychology, and right, it because even if someone is not taking the religion very seriously, घर पे ritual नहीं करते वगैरह वगैरह, but then a local politician comes and says हमें वोट दो क्योंकि हम हिंदू हैं, और वो लोग दे देते हैं, then it is impact. Even if you are It is the least religious person, if your political decision is based on your religion, it's still going to have the same bad impact as if you were extremely religious, because one person has one vote. And even if that person is whether that person is extremely religious or not very religious, it does not matter. Political Yeah. impact does not depend on the intensity of belief. It depends on decisions made on the basis of one's religious identity. Yeah, his point was very good, but I think it is just like saying कि मतलब लोग generally पानी पी लेते हैं, and you don't realize the impact of the water because you have been drinking it every day. Nobody thinks before drinking that cup of water कि मतलब वाह यार हम क्या पी रहे हैं, और मतलब हाथ जोड़ के उसको सलाम करते हैं. सब पीते हैं, रोज पीते हैं, और उसी की Hmm. वजह से हम जी पाते हैं. You know, so that Yeah. has the effect on our life. You only realize the effect जब आपको पानी नहीं मिलता है कि क्या इफेक्ट वो आपकी लाइफ पे डाल रहा था. सो इन अ सिमिलर वे आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजन कि अगर कोई चीज आपको साइकोलॉजिकली उतना इफेक्ट डाल सकती है, वो अपने आप में ही खतरनाक है. वो खतरनाक है क्योंकि आप उसके लिए किसी भी पॉइंट पे जाएंगे जब Okay. आपसे वो छीन ली जाएगी, या कोई आपको बोलेगा कि आपका रिलीजन गलत है और मेरा सही है. तो ठीक है. Got it, Abhishek. Got it. I yeah, want to move on these to the are next all. person, if that's okay with you. Yeah, these are the only Cool. ones. Thank you. Yeah. That was Abhishek responding to a point made by Battler. Battler has come back actually, but he's at the end of the queue, so we'll get to them. Cinephile is here. Hi, Cinephile. You're on mute. Hi, Cinephile. Hey, Vimoh. Hey. Hello, can Go you hear on. me? I can hear you. Go on. Hello? I Hello. think there might be... Cinephile, is there an audio issue or are you just silent? Oh, seems like my wired headset doesn't receive your audio. Oh, okay. So, can you hear me now? Yeah, seems like I have an audio issue for now. Can you hear me now? Okay, there seems to be some technical difficulty here. I will take the next person, who is Pads. Hi, Pads. Yeah, hi Vimoh, can you hear me? I can hear you. Go on. Yeah, this is my first time, so Okay. I don't know Welcome. when you have the broadcast, like कौन से It's दिन a में हम join कर सकते हैं? Wednesday at 9:30 p.m. and Saturday at 9:30 p.m. Oh, that's great. I've been watching your videos and they're really great. Thanks, man. Like if someone from religious background comes and questions, now I have kind of points to make out. Like कोई Yeah, पूछता that is the है, goal. The goal is yeah. to give people weapons. I'm an arms dealer, basically. Okay. Basically, मुझे इतना डेप्थ में पता नहीं like scientific all those things because I am from an art background. I'm an artist. तो मैंने Yeah, same सिर्फ here. I'm कॉलेज में पढ़ा. also from the arts background. I'm a writer. No, I am a fine art painting जो करते हैं ना. I'm even more fine art, okay? अच्छा, sorry. Then ours is a visual art. Yours is a fine art actually. Go on. तो कॉलेज के टाइम में मैं पढ़ता था ये हिस्ट्री ऑफ आर्ट इन इंडिया एंड द वेस्ट. सो तब से मुझे लाइक अबाउट बुद्धिज्म, हिंदू टेम्पल आर्ट कल्चर, ये सब पढ़ाई में मिला था. देन आई वाज ऑलरेडी एन एथिस्ट फ्रॉम 7th एक्चुअली. किसी ने Okay. बोला था मुझे कि
सेवेंथ में आई वाज नॉट गुड एट स्टडीज, सो किसी ने बोला कि सुबह 5 बजे से पहले जाके 21 days कुछ ये लगाओ, दिया लगाओ तो पास हो जाए. आई डिड दैट एक्चुअली, पर मैं फेल हो गया सेवेंथ. सीरियसली. कितने बजे उठते तब थे से सुबह? आई वाज सपोज टू डू दैट बिफोर 5. ओके, तो एंड यू डिड इट एट व्हाट टाइम? 4 बजे उठ के 21 दिया लगाना है, और 21 times आई हैड टू रिवॉल्व अराउंड द टेम्पल. अगर 4 हनुमान बजे का उठ के टेम्पल. अगर 4 बजे उठ के हर रोज 2-2 घंटे पढ़ाई कर लेते ना, तो शायद पास हो जाते. शायद वही था आंसर, वही तो मिला मुझे. तो दैट इज व्हेन आई बिकेम एन एथिस्ट. लाइक कोई भगवान आया नहीं, कुछ किया नहीं घंटा उसने. ओके. तो आफ्टर दैट आई वाज गुड एट स्टडीज लाइक पोस्ट 7, क्योंकि 2 बार पढ़ाई किया तो ऑब्वियसली विल बिकम गुड इन स्टडीज. ओके. पर Yeah, I तो think one would that, expect that without failing you could be an atheist, but that's okay. yeah, As long as you got to it, it's okay. yeah. Maybe next time I'll come up with more points. Okay. This is my Okay. first Thanks, time. Pats. Yeah. Thank you for Thank joining, you. and welcome to the community. Yeah, thank you. Bye bye. Next is Vikas Yadav. Hi, Vikas. You're on mute. Hi. Vikas. Hey, hi Vimoh. Hi. So, You're on mute. yeah. Hey, hi Vimoh. Just Hi. give me. There is some mute. There is some repetition happening, Vikas. So I've been watching your video for like last year or something, and Okay. I love your videos. Like a lot Thanks, of man. things that like I very agree with you. Like on most of the topic, like when it comes to like economics related or even Okay. atheism related, which I have like changed a lot the way I used to think on those topics in last couple of years or last 3 years. Okay. So yeah, so right now I want to talk about this topic, violence. So during lockdown, I heard this means I was working, and while Hmm. working, I used to hear video essays, Hmm. and there was a video essay regarding violence, and I couldn't find like which video was it, but that time I hear it, and that like started this A video essay train of by me. thoughts. Sorry, did you? A video essay by me on violence or by someone Just give else? me a second. Did you? A video essay by me on violence or by someone else? No, I think for someone A video else. essay by me on violence or by someone else? No, Because I there think is an for echo someone happening. I'm else. hearing my own voice. So I'm not able to find it on YouTube right now, but it was from someone else, and it has an idea about violence. Like I haven't had that perspective before, because Okay. it talks about like how the idea of like violence in all of us is like very limited in a very certain perspective, and it is usually very negative. And Hmm. how like violence is like that idea is defined by people in a power most of the time, uh, and that started me thinking of lots of trains of thoughts, and it talks about pacifism also, like pacifism he gave an example about pacifism of Gandhi, like how he talk about pacifism, but when it comes to World War II, he sent Hmm. the Indian soldier into war. He encouraged them to join the war, something, Hmm. and that got me thinking a lot of topics, and like that's like something that I'm thinking, like if it is a violence really that bad, and like suppose if some oppressed person is using violence to stop oppressor, is it even a violence? Should we call like Well, I'm not should a we call pacifist. I'm not a pacifist who thinks that violence is always bad. So I'm my not view on a that I'm is not a that pacifist who thinks that violence is always bad. so I'm my not view on a that is I'm not a that pacifist who thinks yeah, go on, Vikas. Vikas, you're on mute, Vikas. Sorry, I'm not sure about this. Vikas, Yeah. I'm not sure you're on about mute, Vikas, do you want Vikas. to come not back when the sure about audio is this. better on your end? Yeah. Because I'm hearing a lot Not of sure You're echo on of mute, your Vikas. voice. Do you want to come back when the audio is Vikas. better on your end? Yeah. Because I'm hearing a lot Not of sure echo. about Vikas, do you want to
better on your end? Yeah, Because yeah, I'm yeah. hearing a Okay. lot of So, I'm disconnecting you because this audio system is it's unsustainable. Okay, he disconnected on his own. So let's take the next caller. It's Sumit. Hi Sumit. Hey Vimoh, how are you? What's up? Nothing. I just stopped by your channel. I was not very, I mean, not informed. मुझे पता नहीं था कि you do a stream on Saturdays because थोड़ा सा मैं channel से I was just going off because of work and all those stuff. अच्छा तो अच्छा ओके हाँ, तो नो अभी वो चैनल के बैनर के ऊपर लिखा हुआ है वेडनेसडे 9:30 और सैटरडे 9:30. हाँ बट वही है यार थोड़ा सा ये रहता है ना that my office time is a little erratic so अच्छा ओके वो कूल. हाँ so उसकी वजह तो बस यही था कि जो एक तो वो अभिषेक वॉट एवर ही एड्रेस्ड आई वाज अबाउट टू डू दैट वो डुअलिटी वाला थिंग अच्छा तो अच्छा. या ग्लैड ही डिड दैट Abhishek, by the way, सेकंड has left a comment just now. He says, I'm sorry to have talked in an aggressive manner. It was a terrible mistake. I did find Chinmay to be an intelligent person. Okay. या सो आई मीन दैट वाज ही वाज एक्चुअली क्वाइट राइट ऑन दैट और काफी Hmm. वीडियोस भी है इस पे डिबंक कर चुके हैं बहुत Hmm. से लोग इसको Yeah. डुअलिटी वाला या तो एक चीज और थी जो कि थोड़ा सा ये रहता है कि time and again people come up with this ki bhai if religion does not exist and Hmm. if we all of the world become atheist then things like suicidal attempts suicides and mental problem will keep on aggravating so how would you kind of like address this issue because वो कहते हैं I ना would कि यार leave. So if it's a हाँ mental health issue, I would leave it to mental health professionals because I'm not a trained counselor and not even a mental health professional or any kind of healthcare professional. So उस केसेस में तो मैं अपना मतलब ओपिनियन रिजर्व करूंगा. But I would say that if religion is the only thing that is keeping someone safe from harming themselves, then I would not question their religious views. I'll let them have it. That is हाँ my view on this. But because I यही suppose people यही who है are ना more कि well trained in these matters, they can give better, more sound advice. राइट क्योंकि क्या होता है ना कि लोग समझते हैं दैट इफ यू आर बिकमिंग एन एथीस्ट और समथिंग लाइक दैट तो Hmm. यू आर एक्चुअली किलिंग द रिलीजन और यू आर about to bring a society that is very very cruel in the aspect that वहां पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है नहीं, I think ये जो opinion है ना, generally speaking, I find it quite arrogant. Like these people are people who are not of the view that religion is good, but they're saying it's not good, but we still need to let those poor people have it because they don't know how to do things any better. It's like saying मैं तो समझदार हूँ, मैं बहुत smart हूँ, मैं समझता हूँ सब कुछ, पर वो लोग मूर्ख हैं, क्या करें? इसलिए religion को रहना चाहिए. This is in one way I think an expression of privilege. I can understand if in a specific case all someone has is the religion. मैंने इस बारे में पहले बात की है कि अगर if someone has lost their entire family and religion is the only thing they can use to find some measure of peace, I will not be the dick who goes and tells them that there is no God. I will let them have their peace, at least for the time being. But I suppose people who say that religion in general should be allowed to exist or encouraged because those people can't handle it otherwise are just arrogant. कल परसों कोई आया था मेरे प्रोफाइल पे यही सब बकवास कर रहा था उसको ब्लॉक करना पड़ा. अच्छा एक चीज लास्ट से बहुत छोटा सा पॉइंट है दैट आई हैव सीन many young people coming on to different stream not on yours but Hmm. across YouTube जो भी ऐसे Hmm. channels Hmm. हैं and trying to defend their religion and trying to put forth an idea or a premonition about God. Hmm. So I find it very dangerous because this is something that अभी इस उम्र में 19 years के बच्चे हैं 17 साल के बच्चे हैं they actually have to focus on their education study and come up with some good career prospect than doing this shit actually No, वो तो so it's a nature of being a child. I'm pretty sure a lot of them will grow up to look at this time of their life with embarrassment and you know, so I was quite stupid when I was young. I mean, not as stupid as some people, but I was still stupider than I am right now.
So Yeah, I don't think we should look at a child and say that इसका opinion ऐसा है कैसे हो सकता है, because I also find a lot of 17-year-old atheists, right? Who are equally stupid, but they're atheists. I suppose yeah. life experience But is something मेरा that cannot मेरा be जो taught. मतलब my concern is that कि if you have something that is uh, you believe in something, right? तो आप Hmm. अगर उसमें बिलीव करते हो और कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दो ना यार. What how does it really matters to you? But आप What वहां are पे you talking आके about? What are, अच्छा, you're मतलब talking about the religious people. हाँ इन ए जनरल पर्सपेक्टिव कि कोई अगर आपके रिलीजन के बारे में कुछ बोल भी रहा है Hmm. so let them speak. Why does it even bother you, or why it matters you a lot about the Because religion के साथ साथ एक persecution complex आता है. You will notice that every religion thinks that it is under attack, and this is a part of religious teachings also. कि बट you ये are मैंने the देखा chosen people. मेजोरिटेरियंस हाँ, के साथ मेजॉरिटेरियन ज्यादा में है. ज़्यादा होता है. मेजॉरिटेरियंस में ज़्यादा होता है. Like, you know, sometimes people are genuinely under attack. Like Muslims in India are genuinely under attack. Dalits in India हम्म, are genuinely under attack. But Hindus in India are actually not under attack, except in their imagination. So राइट. when you look at people who are of the opinion who get offended when their religion gets criticized, that is what is being touched in their brain, that victimhood complex. And all religions have this inbuilt कि हाँ राइट, you क्योंकि are the ये chosen people एक्चुअली and वेस्टर्न कंट्रीज में भी इफ यू लुक एट अमेरिका yeah, वहां पे yeah, भी yeah, मेजोरिटेरियन में बहुत ये बड़ा है. बहुत बड़ा है ये. Yeah, it happens a तो lot. हाँ वहाँ तो का जो मतलब मैं इवेंजेलिकल क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो तो हमेशा क्रिसमस खतरे में, ये खतरे में, वो खतरे में करता रहता है. सही बात. वो बस यही रहा, मैं मतलब थोड़ा बहुत इसी पे बात करना था. एंड आई नाउ गेट अ लाइक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, और ट्राई करूंगा कनेक्ट रहने का. Great. और yeah, so that's all about it. Cool. And Thanks, Sumit. Thank you for joining thank and welcome. yeah, bye. Bye bye. सो राइट, मेरे पास अभी 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं. नहीं, मेरे पास एक्चुअली 1 2 3 4 5 लोग हैं. आखिर के 2 को मैं नहीं ले पाऊंगा. सो मोहित एंड चिन्मय, प्लीज लॉग आउट. आई वॉन्ट बी एबल टू टेक यू टुडे. यू आर मोस्ट वेलकम टू कम इन द नेक्स्ट एपिसोड. मोहित एंड चिन्मय अगले एपिसोड में आएगा. बाकी के जो लोग हैं, रजत, आवारा बिल्ला, एवीएस जी, र्यूक एंड जेपी नायक, मैं आपसे बात करूंगा आज. अभी और कोई ज्वाइन मत करो, ठीक है? चलो, रजत, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? Can you hear me? I can hear you. Okay. Yeah. I don't know if this is a good question to ask here at this channel, but I'll anyway do it. Hmm. I've been thinking about this idea of the universe being, let's say, finite dimensional. Let's say we have 4 dimensions of space-time. We Hmm. have one dimension for particle, which identifies the different particles in the standard model. And if we are considering, particles as probabilities, their positions as probabilistic, then we can have another value for that. But having said that, we have, let's say, 6 or 7 pieces of information, 6 or 7 dimensions. Is it is it fair enough to say that the entire universe can be represented as a list, or as a table of all of these columns, a list of tuples, for example? Rajat, So is this a physics question or a philosophy question? it is a physics question, but it's also tied to not philosophy and religion in general, I'm because not a physicist. I don't know yeah, anything about yeah, physics. So that's why I was probably not the best place to ask this question. We should yeah. probably do this on a science stream or somewhere. Yeah, I was wondering, but in any case, my point is, with the given knowledge of the given state of the universe, we can represent the universe in terms of this data. Assuming that this is true, then can we not call God just the holder of this, or the maintainer of this table, like huge data set? Okay, so you have clearly come, like, this is a theistic argument, right? No, I'm just speculating. I'm not a theist, but I'm just So speculating. my question is, when I say God, what comes to your mind? If you and I go out and ask someone, hey, what is God? What will they say? Yeah, I'm not talking about people. I'm coming up with the own definition. Yeah, so I don't really think that is relevant. You can define God anyway. Mhm. This remote control is God. What Mm. does that do, really? Yeah, it actually solves a couple of problems with the current understanding of, with the current discussions about God. For It won't example, actually, because what it will do eventually is that it will give rise to the same kind of problems.
what you are doing is that you are assigning some kind of creator or maintainer role to the idea of God. Is that correct? Mm-hmm. So that is not different from anything that present day religions do, Hmm. right? They don't need very, like, if you ask a severely religious person what God is, and then you give them your definition, they will quickly say, yeah, 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 totally. Because they don't give a shit, right? All they need is God to be present somehow. Mm-hmm. You're making it easy for them. That's all. Unless there is evidence with this argument that, there is some, if we do this, then there is, oh my God, we have a logically consistent model of God. It Yeah, is of course. irrelevant. You can Yeah, create any yeah. kind of logically consistent model. That does not matter as long as there is no evidence. So I'm not talking in terms of evidence. I'm talking in terms of definitions. So if you, let's say, if you define the direction east as Mhm. the direction in which the sun appears to rise in the daily, That is the definition of east. that is that is definitional, right? You Hmm. don't go on asking for proof of that, of the direction. No, that's because it's an accepted definition. The word east was invented by us. The Mhm. direction the sun rises is only a human perspective thing because we live on this like Earth perspective thing because we live on this planet. It is not a universal truth that is inherently true. It is true in the circumstances that we exist in. Yeah, exactly. Right? Can we not just say the same thing for God though? God is circumstantial in that. If you want to say God is a product of our mind, then I completely agree with you. Mhm. But But if then with you are this, not saying that, right? You're giving it some inherent property. no, You are no, saying no, that if we were not here no, 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 and the no. universe was without us, God would still exist, right? Mm, According to your model. uh, well, I think you're right in that sense. But I'm thinking it doesn't. God outside of humanity does not even matter. Does it matter? We don't know what I don't know what outside of humanity means. In a universe where humanity does not exist, what the fuck does this conversation even mean? Yeah, exactly. So I'm talking Right? strictly in the context of humanity. I'm not talk. So when you say something like we God You are would not not exist, actually. God would You're not not exist. actually talk. You like you and I are having a conversation, but the things that you are talking about are inherent models, I suppose. They're not No, no, dependent no, on no. I humanity, said right? definitional, and definitions are by definition human artifacts, right? So suppose there is an asteroid in space, right? Suppose that is what we are talking about. You are saying we will call this an asteroid, and I say okay. But if you and I don't exist, the asteroid still exists, right? Mm-hmm. It doesn't matter if it has a definition or not. Yep. So your model, your logically consistent model of God, let's just say it, call it that way. The thing that you're describing, it exists without a description. Mm, I'm actually talking about I'm talking about this universe, so it should exist even if we don't exist. Yeah, so it is an inherent thing. It is not dependent on human perspective, and therefore it is not about definitions. But God, which I'm calling the maintainer of that data set, that is definitional, right? No, Why not? unless you are saying that God specifically uses the universe to maintain us, right? Are you saying that? No, no, no. Why would God focus solely on us? If the universe can exist without us, then the thing that you're talking about is inherent. It's not dependent on us. It is not dependent on us, but we are just calling it God. Why would you call? Again, I'm kind of lost. I think we're going in circles. Mm-hmm. Yeah. Do you want to make another point? No, I'm just considering. So let's say we have a model of the universe, which is this huge data set. Okay. Okay. We have not established well, actually, we have established that it will exist regardless of our definition, Hmm. regardless of this model, regardless, Hmm. regardless of this model. Ah. But calling, we are attributing this supernatural entity, Hmm. which we are defining that supernatural entity, which Why is it supernatural? it is supernatural. Every single attribute of this entity that you described It is is natural. supernatural. It is supernatural because it is outside of nature. We are calling the universe the nature, okay? And we are No, then calling, how is it supernatural? Every single attribute of this entity that you described is a part of nature,
right? Then how is it So supernatural? the agency, the agent that we are attributing as the maintainer, that resides outside, or that is, but we are defining So that you outside just the scope of. here's the thing. Until you were saying that you want to have some kind of logically consistent model of God with respect to this maintainer role, you are still in the bounds of nature somehow. But when you say that it is outside the universe, I have no frame of reference for it, and therefore I cannot say what it is. Hmm. The way I You're piling. You're kind. This is kind of like you have a lot of glasses, and you're putting one on top of another, then another, then another, and you're seeing if it will stay standing. That Hmm. is what it looks like. So yeah, actually, I've been thinking about these ideas, and I've been trying. They have this antagonistic mentality, whereas Hmm. when I try to my go against my beliefs. So whenever I see all of these, What do you believe? so I do not believe that there is any supernatural entity which purportedly controls or Okay, I'll play devil's advocate because this is fun. How do you exactly. know there is no? How do you know there is no supernatural entity? I don't know. I'm saying, how do you know? You That's said that no, you I do don't not know. believe, I right? don't know. Okay, okay, I don't believe. okay. So you don't believe because you don't know. Not just that, but also because based on my understanding of the world, Hmm. I don't find enough, convincing arguments in favor of that. Okay. So you're trying to create a convincing argument. Yeah, I'm trying to challenge myself So and how see. is the supernatural part of a convincing argument? Because there is no definition of the supernatural. But if we come up with this definition, it would be a good enough explanation, no? Okay, so give me the definition of supernatural Uh, according to you. no. This maintainer of this data set, this universe. So What's you have used supernatural as an attribute of this maintainer. I don't know what that does to strengthen your argument if there is no definition of supernatural itself. why is that? What does supernatural mean? If I say, so I have this thing here, it is blue, yellow, and gidgidabun. What's that? Can you repeat? Exactly. If That was intentional. Gidgidabun, I said it's a random word that I made up just now. Okay. If you don't know what Gidgidabun means, what are we talking about really? It is blue, yellow, and Gidgidabun. You need to know what Gidgidabun means, right? Hmm. So I don't know what supernatural means. I see. And just to clarify, I'm actually using. I'm actually looking for people like you or Hmm. someone more towards in the scientific domain who I could have discussions with like this. Oh So yeah, totally. Come whenever you want. I'm yeah, live on Wednesdays at 9:30 and Saturdays at 9:30, and I because love this kind of conversation. when I start having conversations with people on. Normal human beings, you mean? Yeah. It seems, these discussions, we run into these circles like just the way we did today. Hmm. And I often find it very difficult to get into a meaningful conversation. Um, Hmm. so I think, yeah, this was a very good conversation. And I would probably, if you know of anyone else who would, uh, who's say into similar stuff and who's directly approachable because I love scientist Rose Pranav, but Hmm. I believe he does not do live streams. He is actually trying to start one. So when he Yeah. does, you can join. I was talking to him today only. He, another well-known YouTuber, and quite possibly me, might do something together. And if that happens, you are welcome to join there. Okay. Yeah. All And right. you can always come here. Like this channel is not going anywhere. Yeah. Okay. Cool. Yeah. Thanks, Thanks. Rajat. Bye. Bye bye. Before I proceed, I would just like to thank. Hold on, ये किसी ने किया था क्या? यहाँ पे कोई है? I would like to thank Bond007 for the $15 super chat. Much appreciated, Bond007. And I would like to thank Rahul Rayasan for becoming a member. Again, I'll remind everyone there's a join button below. If you want to become a member of the channel, you can do so. Your support helps me buy books, buy software, and pay my electricity bill and my internet bill.
I'm a full-time content creator. This podcast is sponsored by you and people like you. If you can't pay, it's perfectly all right. The content is always going to be free, except for some members only perks. So thank you to anyone who chooses to support my work. It's really appreciated. It is because of people like you that people like me can do the things that we do. That was an extremely vague sentence and can be applied in any context, like a serial killer could say it. It is because of people like you that people like me can do the things that we do. Right. So the next person is Awara Billa. Hi. हेलो Awara Billa. आवाज आ रही है आप लौट आए? हेलो आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? बताओ. हाँ, अरे सॉरी मेरा नेट चला गया था एक्चुअली बीच में ओके ओके, कोई बात नहीं. सो आपको एक फॉलो अप सो मैं हम्म. यही पूछ रहा था बेसिकली कि लाइक मेरे को अगर स्टोरी राइटिंग करनी तो मैं कैसे करूँ एंड उसका डाउट जो था मेरा क्लियर हो गया Okay. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द बुद्धिज्म द कन्वर्जन थिंग हम्म. एंड हम लोग का ये था कि अरविंद केजरीवाल क्या एक्शन लेगा तो आई जस्ट रिसेंटली मैंने मतलब इन द मेन टाइम मैंने एक आर्टिकल पढ़ा एनडीटीवी के द्वारा जिसमें था कि जब केजरीवाल से पूछा गया इस बारे में सो उन्होंने एक Awara Billa, डायरेक्ट एक लाइन second, दी एक second, एक second. ओके ओके श्योर Guys, for those of you who are talking about topics like suicide in the chat, I would recommend that you do not do so because you never know who you are influencing. There is suicidal ideation. Like, I don't want to encourage it. Don't talk about that stuff. If you have someone in your life who's struggling with thoughts like that, take them to a therapist. This is not the place to talk about it. Awara Billa, go on. हाँ सो मतलब केजरीवाल का रिस्पॉन्स ये था कि आई वॉज बोर्न ऑन द डे ऑफ जन्माष्टमी गॉड हैज मतलब मैं इंग्लिश में पढ़ूँ आई वॉज बोर्न ऑन द डे ऑफ जन्माष्टमी गॉड हैज सेंट मी विद अ स्पेशल मोटिव टू डिस्ट्रॉय कंस की औलाद एंड द वंस डूइंग करप्शन दिस वाज हिज रिस्पॉन्स ऑन व्हाई राजेंद्र पाल गौतम converted 10,000 Hindus into Buddhism. So I How think was so. this a response to that? Like, was he talking to I mean, what the about people? Ray? Simply what about Ray? He didn't have any response to the thing. No, what exactly did he say this in response to? जब Like somebody told him, तुम्हारे पार्टी के किसी आदमी ने बहुत सारे हिंदुओं को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया है, and he said, मैं कंस को मारने वाला हूँ. हाँ, so उसका रिस्पॉन्स यही था कि लाइक उन्होंने मतलब सीधे टैकल नहीं किया ना उस क्वेश्चन को क्योंकि अगर उनका कहते तो सो हाँ, साइड स्टेप कर दिया. राजेंद्र पाल गौतम गुस्सा हो जाते पूरी दलित कम्युनिटी गुस्सा हो जाती अगर अपोज में कहते कि उनका क्या कहते हैं उनका राइट है तो हिंदू वोटर है वो खराब हो जाता. So पता नहीं यार केजरीवाल क्या बोलता मुझे कुछ समझ में नहीं आता टाइम. आई डोंट नो व्हाट ही मींस. आई थिंक एक चीज तो क्लियर है. ही इज ट्राइंग टू केटर टू हिज हिंदू वोटर्स, हिंदू अपर कास्ट जो वोट बैंक है बीजेपी का, जो कि उसका भी वोट बैंक है. ही इज ट्राइंग टू केटर टू देम. दैट्स ऑल आई कैन टेक फ्रॉम दैट. I mean, there was a time when Kejriwal and Kanhaiya Kumar both said they were atheist, and now we say Kanhaiya Kumar मंदिर जा रहे हैं केरला में, Kejriwal doing all this shit. Yeah, हाँ, this is why I will never enter politics. Never be able to enter politics. हाँ, so बस एक आखिरी क्वेश्चन था बहुत छोटा सा क्योंकि अभी जैसे कांग्रेस की क्या भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी. You seemed a little मतलब ऑब्वियसली मैं भी उस बात से रिलेट कर पाता हूँ कि अच्छा हो रहा है. एज अ दलित पर्सन which political party should I support? क्योंकि बीजेपी देखिए अभी रिसेंटली जो हो रहा है आप जानते ही हैं उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस सालों से Which political party should you support with 2024 in mind? Yep. एज अ हाँ क्योंकि तब तक मैं वोट करने के लिए मतलब वोट कर सकूँ तब तक के लिए अभी नहीं बट तब मैं कर पाऊंगा. बीजेपी जो कर रही मेरा ये है कि अभी साल 2022 खत्म भी नहीं हुआ है. ठीक है. आई वुड नॉट लाइक मैं खुद भी नहीं जानता मैं 2024 के इलेक्शन में किसको सपोर्ट करूंगा. नो आई एम नॉट आस्किंग लाइक एब्सोल्युटली आई एम आस्किंग. मैं समझ रहा हूँ मैं तुम्हारा सवाल समझ गया. जवाब सुन लो. मैं कहता हूँ कि if you are looking for a political party to support right now, I don't know what to tell you. If you are asking which political party to support before for 2024, I don't know what to tell you क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लक्स में हैं अभी. मुझे पता नहीं है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उतनी पावरफुल हो पाएगी जितना की उम्मीद की जा रही है. मुझे पता नहीं नीतीश कुमार जिस फ्रंट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ बन पाएगा नहीं. मुझे पता नहीं बीजेपी आने वाले महीनों में किस पार्टी को छोड़ेगी और किसको गले लगाएगी. 2024 आने में टाइम है और 2024 वाले डिसीजन में अभी तो कभी ना खुद लूंगा ना तुमको बोलूंगा कि क्लियर डिसीजन ले लो. अपनी नजरें हर चीज पे रखो और जैसे जैसे समय बीतता है अपने ओपिनियंस फॉर्म करो. इस चैनल पे मैं ऑडियंस को कभी नहीं बताऊंगा कि किस पार्टी को वोट करो. इवन तो मैं कभी कभी बोल सकता हूँ कि इस पार्टी को वोट मत करो.
पर किसको वोट करो ये बताना मेरा काम नहीं है, और मैं उस दिशा में जाना भी नहीं चाहता। हाँ, so I mean I was talking about like in terms of ideology. इसको सपोर्ट इन द किसी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इट्स पॉलिटिक्स। क्योंकि बीजेपी के आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। कांग्रेस सालों से क्या कहते हैं दलित मूवमेंट कर ऑपरेस कर मतलब दलितों को ऑपरेस कर रही है। अभी जो कन्वर्जन हुआ है उस पे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल वगैरह कर रहे हैं कि हिंदू विरोधी काम आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, ऑल दैट। कांग्रेस मैं भी बोला ना, किसी का आइडियोलॉजी नहीं है कुछ। आइडियली कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी अगर लिबरल या कुछ होती तो आम आदमी पार्टी इस चीज को गले लगाती कि ये जो हुआ है। कांग्रेस अगर सेक्युलर होती तो हिंदूगिरी नहीं करती। बीजेपी अगर हिंदुत्व होती तो आम आदमी पार्टी के करने पे बहुत ज्यादा शोर मचाती कांग्रेस से ज्यादा। ये लोग सब अपॉर्चुनिस्ट हैं। दीज आर ऑल पॉलिटिशियंस। यू हैव टू चूज समवन हु वर्क्स एट द मोमेंट, एंड यू हैव दैट मोमेंट हैज नॉट येट कम, इज व्हाट आई एम सेइंग। बीजेपी का हिंदुत्व आइडियोलॉजी नहीं है, बीजेपी का आइडियोलॉजी अपॉर्चुनिज्म है। वो हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है, which is not to say that it's a non toxic ideology. It is not, it's a bad thing to follow. बट ये लोग सब जो भी फॉलो करते हैं सिर्फ पावर के लिए फॉलो करते हैं। इस चीज को हमेशा माइंड में रखना चाहिए। आई मीन ये चीज तो हम सब जानते हैं, बट फ्रॉम एन दलित पर्सन इन उत्तर प्रदेश, द प्रॉब्लम हियर इज लाइक आइडियली आई शुड सपोर्ट बीएसपी हियर बिकॉज दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग फॉर द कम्युनिटी। बट क्या है कि एग्जीक्यूशन अभी इतना अच्छा है नहीं कि पूरे देश में इम्पैक्ट आ सके, उतने रैलीज That's what वगैरह। I'm saying. बीएसपी पे नजर रखो, देखो आने वाले महीनों में क्या होता है। हो सकता है 2024 के चुनाव से पहले तुमको लगे बीएसपी इज द बेस्ट थिंग टू वोट फॉर, एंड देन गो फॉर इट। इफ यू डोंट थिंक दैट इज द केस, देन वोट फॉर समवन एल्स। हाँ नहीं, आई मीन इवन अगर वो कुछ ना करें तब भी बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, क्योंकि जब उनके पास लाइक कुछ ही अगर एमएलए वगैरह जाएंगे हाउस में तो थोड़ी बहुत पावर आएगी जो कि कम्युनिटी को हेल्प करेगा। बट फिर मैं सोचता हूँ यार मैं अपनी कम्युनिटी का देखूँ या मैं पूरे देश का देखूँ, तो उस क्या कहते हैं उस हिसाब से कांग्रेस को वोट करना चाहिए बिकॉज दे आर द एज ऑफ नाउ द बिगेस्ट कंपटीशन अगेन फॉर। मैं इस बारे में मैं वही बोलूंगा जो मैंने पहले बोला। मैं तुमको किसी पार्टी को सपोर्ट करने की एडवाइस नहीं दे सकता इस चैनल पर। क्या मैं वही कहूंगा, सब Yep, yep. पार्टियों पर नजर रखो और जब समय आए तो सोच समझ के डिसाइड करो। And what about the thing like not entering politics? Why so? I mean, हु you मी? obviously. Yeah. अरे मैं वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि अच्छे खासे नास्तिक पॉलिटिक्स में घुस के देवी देवताओं की प्रशंसा करने लगते हैं। मेरे से वो नहीं होगा। तो आप मत करो ना, क्या दिक्कत है? मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ मतलब। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे जैसे लोग पॉलिटिक्स में घुसेंगे तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि करना पड़ता है इन लोगों को। I mean, this is a हो little. सकता है आज से 20-25 साल बाद सिचुएशन बदल जाए और बट ओपनली सिचुएशन तभी नास्तिक बदलेगी जब लोग पॉलिटिशियन। ट्राई करेंगे। क्या सिचुएशन तभी बदलेगी जब लोग ट्राई करेंगे। कोई एक बंदा आएगा एथीस्ट, जो हाँ, एथीस्ट बना रहेगा, चाहे एंड उसको आई डेफिनेटली होप समबडी ट्राइज। इट्स प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी मी। I mean, मौका मिले तो। बट आई मीन ट्राई धीरे-धीरे वो चीज़ चेंज कर, क्योंकि देखिए आप लोग स्ट्रीम कर रहे हैं और आपसे काफ़ी ज़्यादा मैं भी सीखा हूँ, काफ़ी लोग सीख रहे हैं। वो बात एकदम सही है। बट जो बड़े लेवल पे इम्पैक्ट है वो पॉलिटिशियन ही ला सकते हैं। एंड ये अपने क्या कहते हैं नौटंकी कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, नॉट नेसेसरली। ऐसे बहुत से हाँ। लोग हैं जो बिना देखो, एक चीज तुम ध्यान में रखनी जो जरूरी है वो ये है कि तुम पॉलिटिक्स में हो। मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ, क्योंकि हर चीज पॉलिटिकल है। हम लोग जब पॉलिटिक्स सोचते हैं तो हमको लगता है पॉलिटिकल पार्टीज जो करती हैं वो पॉलिटिक्स है। नहीं, हम लोग जो आपस में बातें कर रहे हैं ये भी ओपिनियन चेंजिंग के काम में आती है ना। हम सब पॉलिटिक्स में हैं। इट इज इनएस्केपेबल। हाँ, आई मीन आई एग्री विद दैट। बट मेरा ये मानना था कि हम लोग लाइक सो हाँ मतलब हम लोग ज़्यादा जितने भी एथिस्ट वगैरह बंदे हैं वो सब ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि अब हम जाएंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा, बिकॉज इतना कोई वोट बैंक हमारा बना हुआ है नहीं। बट मेरा बोलने का मतलब भाई जब तो कोई जाएगा नहीं तो फिर ये सिनेरियो बना रहेगा। आपको जाना है, पहला बंदा हारेगा। इस तरह दलितों की आप देख सकते हैं ना, जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद जब वो पहली बार लाइक पॉलिटिक्स में आए थे तो वो हार गए थे। बट धीरे धीरे सिचुएशन आज 100 साल बाद ही 50 साल बाद अब चेंज हुआ है। बीएसपी ऐसी पार्टी 4 बार पावर में रह चुकी है। सो आई वुड से कि मतलब आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू था थोड़ा नहीं ठीक लगा, तो मैंने सोचा शेयर क्यों नहीं करूं मतलब। नहीं, टोटली यू फील फ्री टू कंडेम माय कॉवर्डिस एज फार एज पॉलिटिकल पार्टीज इज अरे कंसर्न्ड। चलो That's ठीक the है, fun और with आई विल मूव आउट टू द it नेक्स्ट was पर्सन इफ fun दैट्स talking ओके। with you. या Yeah, it was सेम हियर, fun सेम हियर। talking with you. चलिए, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, बाय बाय। So somebody
So the link is gone because I'm not taking any more people. Vitruvian Man and Kavan, I'm like there are 2 more people. I will take them on, talk to them, and then the stream will be over because बहुत से लोग हो गए और 1 घंटा 40 मिनट होने जा रहा है. आज लगता है 2 घंटा चलेगा ये. But yeah, let me take Ryuk. Hi. Hello, am I Hi. audible? Yes, you're audible. Can you hear me? I can hear you. हाँ, तो कैसे हो आप? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा ही हूँ. अच्छा, आपका बहुत अच्छा. रिसेंटली एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे आपका फॉल्स डाइकोटमी के ऊपर. हाँ. तो वो मुझे अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन. मतलब Okay. जो रिलीजियस लोग प्रोवाइड करते हैं फाइन ट्यूनिंग वगैरह, मुझे पता है ये गलत है, बट कई में आर्ग्यूमेंट जब वैसे मेरे दोस्त प्रेजेंट करते मेरे सामने तो मैं नहीं दे पाता था, मतलब अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था. तो अभी तो मैं डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट भी नहीं देता हूँ, सीधा आपका चैनल ही खोल के दिखा देता हूँ. Nice. तो I'm glad that it's the content is useful to you. हाँ, लेकिन फिर आपका मैंने एक नेक्स्ट वीडियो देखा जहाँ पे आपने जो है हाउ फ्रॉम रैंडम सिचुएशंस यूनिवर्स में पॉप अप कुछ इंस्टाग्राम पे देखा था. हाँ, तो उस पे आई थिंक मैं कुछ एक क्रिटिसिज्म रखना चाहूँगा अपना. हाँ, बताओ. जैसे आपने फॉल्स डाइकोटमी वाले वीडियो में आपने बॉक्स का एग्जांपल लिया था और फिर उसमें बताया कि द बॉक्स इट कुड बी एनीथिंग, आइदर अ लड्डू और यू नो एनीथिंग, इरेजर, और इट कुड बी एम्प्टी. बट Yeah. द फॉल्स डाइकोटमी इज दैट कि जो मतलब जिसने बॉक्स पकड़ा है वो बोल रहा है कि वो मतलब तुम बोल रहे हो कि इस पे कुछ भी नहीं है. मतलब 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स रख रहे हैं, या फिर लड्डू होगा या फिर नथिंग. तो सेम आप भी जो अभी नेक्स्ट वीडियो में आपने पोस्ट किया था कि रैंडम इवेंट से जो है यूनिवर्स पॉप अप हुआ, वो भी तो मतलब एक डाइकोटमी में ही फंस गया मैंने कि नहीं कहा. आइदर मैंने कंप्लीटली नहीं फाइन कहा कि ट्यून और फिर रैंडम. नहीं. देखो, यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के लाखों करोड़ों कारण हो सकते हैं, ठीक है? उनमें से रैंडम चांस एक कारण हो सकता है. मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकता. मैं ये नहीं कह रहा कि है, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि उसको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता. रिलीजियस लोग जो फॉल्स डाइकोटमी करते हैं वो ये होता है कि या तो गॉड ने किया या तो रैंडम चांस ने किया, और रैंडम चांस नहीं हो सकता. उसको रेस्पॉन्ड करने के 2 तरीके हैं. एक, रैंडम चांस है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, और दूसरा, रैंडम चांस नहीं है ये तो मैं कैसे पता. दैट्स व्हाट दैट प्रॉब्लम वाज अबाउट. हाँ, अच्छा. मैं ये नहीं कह रहा था कि रैंडम चांस है. मैं ये कह रहा था कि रैंडम चांस को हम लोग ऐसे ही डिस्कार्ड नहीं कर सकते. ठीक वैसे ही जैसे हम गॉड को नहीं डिस्कार्ड कर सकते, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी भी धर्म को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास as long as there is no evidence for something, we should not accept it. There is no evidence for random chance, right? But random chance is probably not impossible because we don't have any data to support that theory. यस. अब समझ में आया? हाँ, समझ गया. और सेकंड तो मेरा ये है, आपको लाइक क्रिटिसिज्म नहीं है. सपोज जब न्यूटन का एरा चल रहा था, मतलब जब वो बहुत फेमस हो गया था एंड एवरीवन इज फॉलोइंग हिम कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज द बेस्ट. फिर आइंस्टाइन आ गया और उसने जो है कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखा. बट उसने जब रखा तो वो मर गया. तब उसके बाद भी जो है लोगों को एविडेंस नहीं मिला. आज से जो है अभी हम लोग को जो है एविडेंस मिल रहा है कि लाइट बेंड्स अराउंड यू नो कर्व स्पेस टाइम. और जो अभी कौन सा वो सैटेलाइट भेजा था नासा ने, मैं नाम भूल गया रिसेंटली. हाँ, JWST. हाँ, जेम्स वेब. उसके थ्रू हमें पता चला कर्वेचर ऑफ जो लाइट जो है गैलेक्सीज के अराउंड कर्व हो जाते हैं. तो उससे जो है जनरल रिलेटिविटी प्रूफ हो गया. बट आइंस्टाइन ने उस टाइम बता दिया था, लेकिन उस टाइम उसके पास प्रूफ नहीं था. तो मेरा भी रिलीजियस लोगों को लेके यही है कि तुम तो आर्गुमेंट ही दिए जा रहे हो, मतलब इतने हजारों सालों से. प्रूफ तो करो ट्राई करने का. मतलब आइंस्टाइन ने सिर्फ आर्गुमेंट नहीं दिया था, उसने बैठ के बहुत सारा मेहनत करके प्रूफ भी किया. बट रिलीजियस लोग बस आर्गुमेंट ही दे रहे हैं और ब्रूट फोर्सली लोगों को मार के बस वो कर रहे हैं. आइंस्टाइन ने जो बोला था वो फॉल्सिफाइबल था ना. आइंस्टाइन ने लिख के दिया ये होगा. अगर ये सब नहीं होता तो मैं गलत हूँ. क्या रिलीजियस लोग कभी भी ऐसा बोलेंगे कि गॉड यहाँ पे है, अगर वहां पे गॉड नहीं मिला तो मैं गलत हूँ और गॉड एग्जिस्ट नहीं करता?
वो हमेशा गोल नहीं पोस्ट शिफ्ट कर देंगे। वो बोलेंगे नहीं वहाँ नहीं मिला, अच्छा वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिला, अच्छा वहाँ मिलेगा। That's not science. मतलब That's just shifting of goalposts. हम्म, Einstein left very clear definition of what he meant, right? ये लोग इन लोगों के मेटाफर्स पास में ही क्लियर घुमाते डेफिनेशन नहीं है। रहेंगे। हाँ, इसके ऊपर एक वीडियो वे बनाया है वैसे, कल सुबह रिलीज हाँ होने वाला है, हाँ शॉर्ट है, यूट्यूब शॉर्ट है, कल सुबह आएगा चैनल पे। हाँ, बस इतना ही था। नाइस टॉकिंग थैंक्स विद रियुक। बाय द वे जाने से पहले तुमको एक दो कमेंट दिखा दो जो लोगों ने तुम्हारे लिए भेजे। एक है रियुक व्हाई यू किल लाइट यागामी, और दूसरा वाला है रियुक यू वांट एप्पल। हाँ हाँ, दे दो। आपने देखा है डेथ नोट? हाँ देखा है, मस्त है। आई लव रियुक, द कैरेक्टर ऑफ रियुक एंड डेथ नोट। यही चलो रियल लाइफ में भी होता है। फर्स्ट फर्स्ट वो गॉड जो होता है भलाई के लिए आता है, फिर वो अपना ही रिलीजन बन जाता है। इसके अगेंस्ट जो बोलेगा मार दो। हाँ, मतलब टू मच पावर वैसा इन ही। एनी पर्सन्स हैंड इज अ बैड। या वही। चलो, थैंक यू रियुक, ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय। एंड लास्ट इज जेपी नायक। हाय जेपी। हाय, नमस्कार. नमस्कार, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम सर। Thank you for answering. हाँ, आस्क अ आप क्वेश्चन। हाँ, वही जो मैं आज इंस्टाग्राम पे पूछा था. हाँ, तो ऑडियंस को पता नहीं ना, एक बार बोल दो। हाँ, मैसेज में भी अभी दिया था कि मुझे लगता है कि हम जो इंडियंस है उनका जो मोरालिटी है या फिर ह्यूमैनिटी है हम्म वो रिलीजन के बेस पे टिका हुआ है. मतलब अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, हम्म ऐसा ज्यादातर लोगों का ऐसा ही मानना है. तो इसीलिए वो अच्छा करते हैं. अगर किस दिन उसके उनके विश्वास चला जाएगा भगवान के ऊपर, या फिर एक्चुअली मुझे ये विश्वास नहीं है कोई है भगवान में, नहीं हम्म है. लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही मानते हैं ना कि हम अगर अच्छा करेंगे तो बाद में हमको कुछ भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा. हाँ, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि अगर किसी दिन उनका विश्वास चला जाएगा कि ऐसा नहीं होता है, हम्म हम दुनिया में देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है, तो फिर वो उनको, जब हम हिंदू रिलीजन की बात कर रहा हूँ, कि वो समझते हैं कि अगले जन्म में शायद मिलेगा, या फिर जिसको अच्छा हुआ है वो पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया है इसलिए उसको मिल रहा है. वो हम्म विश्वास अगर चला जाएगा तो उनका हम्म जो मोरालिटी है, ह्यूमैनिटी है, उतना नहीं तो रहेगा, मुझे ऐसा लगता है. नहीं, आई थिंक मोरालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन रिलीजन। मुझे लगता है कि अगर किसी का रिलीजियस व्यू चला जाता है ना, वो अचानक गुंडा नहीं बन जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसका रिलीजियस व्यू चला गया और फिर वो ऐसे ही रहे जैसे कि वो थे। इंडिया में एक रिलीजियस व्यू कॉमन है। बहुत से जगह पे बहुत सारे रिलीजियस व्यूज कॉमन है, और रिलीजन हमेशा ये कोशिश करता है कि ये बत दिखाए कि उसके बिना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पर ये असल में सच नहीं है। ये पता है कैसा है? एक घर है, उस घर में एक आदमी रहता है, और उस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, और ये आदमी करता धरता कुछ नहीं है। खाना नहीं बनाता है, सफाई नहीं करता है, पर बोलता है अगर मुझे इस घर से निकाल दिया ना तो इस घर का छत गिर जाएगा, और लोग डर के मारे उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। अगर उस आदमी को किसी दिन निकाल दिया ना, तो लोगों को पता चलेगा कि छत नहीं गिरेगा, लोग एडजस्ट कर लेंगे। वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए वैसा बोल रहा होता है। मुझे लगता है कि अगर इंडिया का मोरालिटी अभी एक रिलीजन के ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ नॉट इवन अ गुड थिंग, बिकॉज़ मुझे लगता है कि कार्मिक मोरालिटी काफ़ी टॉक्सिक होता है। क्योंकि हम लोग कर्मा में विश्वास करते हैं। जब कोई सफ़र कर रहा होता है हमारे सामने, कोई दुःख से गुज़र रहा होता है, हम बोलते हैं उसी ने कुछ किया होगा पिछले जन्म में, एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग। सो अगर वो टेंडेंसी चला जाता है, मे बी वी विल बिकम मोर केपेबल ऑफ हेल्पिंग पीपल। सो दैट इज़ अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। हाँ, कुछ दिन पहले मुझे भी ऐसा ही कुछ आइडिया आया था. किसने हुँ। बोला कि हाँ, आज मैं जो अच्छा हूँ, खुश हूँ, ये शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ किया था. तो मैंने उसको बोला कि तो मैंने उसको बोला कि अगर कोई गवर्नमेंट किसी को कोई ऑफेंस करता है, मतलब कुछ गलती करता है, टेररिस्ट कुछ गलती हुँ, करता है, तो उसको सजा देती है, तुम खुश हुँ, होते को नहीं होते हो? वो बोला हाँ, हुँ, जरूर खुश होता हूँ, दंड तो मिलना चाहिए. तो मैं हुँ, मैं बोला कि अगली बार तुम जब किसी भिखारी को देखो या फिर अंधा लंगड़ा किसी को देखो, तो तुम हुँ। खुश हो जाओ कि भगवान ने उसको सजा दिया है. हुँ। क्या तुम Yeah, that's a खुश हो very good सकते? argument actually. That's a very good point. तो, हाँ, तो मैंने बोला क्या तुम खुश हो सकते हो? वो बोला नहीं हुँ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कि हमको Yeah, उनको दया दया करना चाहिए.
तो मैंने बोला तो फिर तुम क्या टेररिस्ट को दया कर सकते हो जब सरकार उसको दंड देता है? हम्म तो वो फंस गया बेचारा। ऐसा और था। इसका एक चीज भी है ना, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है और आप कहते हैं मैंने ही कुछ अच्छा किया था, पता नहीं उसकी वजह से मिला, आप ये भी कह रहे होते हैं कि जिसके साथ नहीं अच्छा हुआ उसने कुछ बुरा किया होगा, राइट? क्योंकि सिस्टम हाँ। खाली आपके आपके लिए तो काम नहीं कर रहा है। सिस्टम अगर है, कर्म अगर काम करता है तो इट्स यूनिवर्सल। अगर हम्म। आपको कुछ अच्छा मिला है, आप खुश हो जाएंगे, बोल मैंने कुछ अच्छा काम किया था। पर जिसको कुछ अच्छा नहीं मिला, आप ये भी कह रहे हैं विदाउट सेइंग इट कि उसने कुछ गलत किया होगा, जबकि ऐसा करना आपके पावर में नहीं है। मतलब यू डोंट नो हम्म। व्हाई दे सफर्ड, सो व्हाई वुड यू थिंक दैट उसने कुछ बुरा किया होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट बिकम्स अ वे टू congratulate yourself and also blame other people for things that you don't know about. एक्चुअली मेरे जन्म से पहले भी मेरा फैमिली एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए मैं भी जुड़ गया। और हम्म जितने सारे मेरे सोशल सर्कल है, दोस्त वगैरह है, ज्यादातर रिलीजियस और गॉड के भी ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हम्म हैं। हम्म तो आज भी मतलब बाहर से सब मुझे भी ऐसा ही मानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा क्या धर्म विश्वासी हूँ, ऐसा अच्छा मानते हैं। अच्छा लेकिन मैं अंदर से मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता है कुछ। लेकिन मुझे बहुत दिनों से ऐसे, बहुत साल हो गया मुझे, ऐसा धीरे धीरे हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर भी मैं अच्छा जुड़ा रहा हूँ इसलिए ताकि कुछ अच्छे चीज मतलब अच्छे चीज सिखाता है, जैसे क्या चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब अच्छा नहीं है। हम्म इसीलिए मैं जुड़ा रहा था, लेकिन पिछले कुछ अगर आप साल से। अगर आप अपने हाँ। लाइक अगर आप अपने धर्म में नहीं होते तो क्या आप चोरी कर रहे होते? वो तो डाउटफुल है, पता हाँ, नहीं। दैट्स एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक यू वुड बी। जो जिसको नहीं चोरी नहीं नहीं करना होता वो चोरी नहीं करता है। नहीं, किंतु अगर मैं ज्यादातर लोगों एवरेज निकालूं तो ज्यादातर जो धर्म विश्वासी होते हैं वो हम्म थोड़ा तो अच्छा होते हैं। मैं नहीं, जो मैं जो दुनिया भर सर्कल के में जेलों में दुनिया भर के जेल्स में ज्यादातर हाँ, क्रिमिनल्स रिलीजियस होते हैं। और जिन देशों में रिलीजन कम होता है वहां पे क्राइम बहुत लो होता है। ये स्टैटिस्टिकली मैं ट्रू है। हाँ, वो शायद हो सकता है, लेकिन मैं बस इंडिया का बात कर रहा हूँ। और एक मेरा इंडिया में भी आत्म। ज्यादातर क्रिमिनल्स, किसी भी जेल में जाके देखो, ज्यादातर मर्डरर वगैरह सब धार्मिक होते हैं। कोई भी नास्तिक नहीं मिले, मतलब बहुत ज्यादा नास्तिक नहीं मिलेंगे आपको, मुझे लगता है। इसके ऊपर सर्वे नहीं हुआ है, बट मैं ग्लोबल एवरेज की बात कर रहा था और उसके बेसिस पे इंडिया में मुझे लगता है वही होगा। कितने लोग हैं यार, कितने बाबा लोग हैं जो सेक्स स्कैंडल में पड़े रहते हैं। कितने लोग हैं जो कि धार्मिक होते हैं पर दूसरों का माल चोरी करते हैं, क्या मर्डर रेप वगैरह सब करते हैं। रिलीजन का मोरालिटी के साथ कोई लेन देन नहीं है। अगर आप अपना धर्म पूरी तरह से छोड़ भी दोगे ना, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। धर्म के बदलने से कुछ भी नहीं बदलेगा। मुझे मुझे ऐसे लगता है जो बाबा लोग जो मतलब भंड बाबा होते हैं जो। हम्म अरे कट गया रे, जेपी नायक जी आपका कनेक्शन कट गया। आई थिंक ही इज आइदर गोइंग टू कम बैक। करते ओ हैं ही इज बैक। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए मुझे बोलिए ऐसा बोलिए। लगता है जो बाबा लोग हैं जो जेल में है या ऐसे कुछ करते हैं, हम्म एक्चुअली में वो अंदर से बिलीव नहीं करते हैं। हाउ डू यू नो दैट? अब मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है मुझे पता मैं नहीं। कहता हूँ कि कोई क्या विश्वास करता है, क्या विश्वास नहीं करता है, ये जानने के हम्म। लिए हमारे पास कुछ अच्छा तरीका नहीं है। सो अगर आप मुझे हम्म। बोलेंगे कि आप किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं, तो मैं आपका बात हम्म। मान लूँगा ना। मैं कैसे टेस्ट करूँ आप क्या विश्वास करते हैं, हम्म। राइट? सो जब हम बाबा हम्म। लोगों को क्लीन चिट देते हैं ना, हम लोग इसलिए देते हैं कि हमारे लिए हमारे मन में हमारे रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट होता है। हम उसको एक्सटेंड कर हम्म। देते हैं कि वो आदमी धार्मिक है, मतलब वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि मुझे लगता है कि मेरे धर्म के लोग करते हैं। जबकि ऐसा सच नहीं है। मेरे पास हम्म। ये जानने का कोई तरीका नहीं कि कोई क्या मानता है। हो सकता है यू आर राइट, मे बी दे डोंट बिलीव, बट हाउ डू आई नो? सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक देयर वर्ड फॉर इट। और ऐसे कई लोग हैं जो कि विश्वास करते हैं, सॉरी, ऐसे कई लोग हैं जो कि विश्वास नहीं करते हैं पर फिर भी धर्म को पकड़े रहते हैं क्योंकि उससे उनको फाइनेंशियल लाभ हो रहा होता है। हाँ, बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ। हुँ, आज मैं बिलीव नहीं करता हूँ,
लेकिन क्योंकि मैं जन्म से आज मुझे 40 साल हो गया, क्योंकि मैं एक रिलीजियस फैमिली में बढ़ा हुआ हूँ, सराउंडिंग से मैं बढ़ा हुआ हूँ, तो इसी बारे में, रिलीजन के बारे में, गीता बोलो, ये बोलो, जो धर्म पुस्तक है उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान मुझे है। तो मैं अगर चाहूँ अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए इसको यूज कर सकता हूँ। और ये मुझे भी लगता है बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, उनको पता चल जाता है कि एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है, गॉड वगैरह नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत दिन से ऐसे हुए और उसका फायदा उठा सकते हैं, रेस्पेक्ट मिल सकता है समाज से, तो अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज़ हाँ आप अपने धर्म ग्रंथों के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, पर आपके धर्म ग्रंथ आपको सिखाते हैं कि आपको जाति प्रथा में विश्वास करना चाहिए या दूसरे धर्म के लोगों से घृणा करनी चाहिए। अगर आप अपने धर्म को पूरी तरह से मानेंगे, तो आप ये बुरी चीज़ें भी करेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इमोरल चीज़ें हैं जो धर्म सिखाता है। क्रिश्चियनिटी सिखाता है, इस्लाम सिखाता है, हिंदुइज़्म सिखाता है। अगर कोई आदमी इन धर्मों को अच्छी तरह से मानता है, तो वो काम भी करेगा जो ये बुक सिखाती है, और वो जो स ये जो चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। हाँ, वो सब अभी एक्चुअली मैं तो क्षत्रिय और कास्ट का हूँ। मुझे हुँ। इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में इतना खराब बहुत सारे लोगों के ऊपर हुआ है, तो मैंने दूसरे यूट्यूब चैनल से उसको पता चला और कौन से मैं चैनल भी देखिए? कौन से चैनल से? ह्यूमन विद साइंस। हाँ, ह्यूमन विद साइंस देखते रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ पता चलेगा। अच्छा हाँ चैनल है। मैंने, हाँ आपका तो रिसेंटली देखा है, उनको तो बहुत दिन से देख रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी देखते रहिए। डिसाइड किया है कि अगले बार जब मैं गाँव जाऊंगा, तो जैसे करते हैं ना, किसी के मरने के 10 दिन के बाद तो सारे ब्राह्मण को माफी मांगते हैं, हुँ, नीचे गिर गए। मैं हुँ। ऐसा ही कुछ करूंगा, मतलब हमारे गांव में जो दलित लोग हैं उनके साथ ऐसा ही करूंगा। दैट्स वेरी गुड, और दैट्स अ वेरी और नोबल मैं जेस्चर। और मैं चाहूंगा कि वो हमारा मीडिया दिखाए, ट्राई ओके, करूंगा, देखते हैं क्या होता ठीक है। है। अगर दिखाता है तो हमारे साथ लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, थैंक ठीक है, जेपी जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड होप यू कम बैक समटाइम। गुड नाइट। यू, थैंक यू, गुड नाइट। अभी और लोग नहीं ले सकता सर, आवारा बिल्ला। I can't take any more people. It's already 1 hour 56 minutes. Please come back in the next episode and we'll talk. ठीक है? So I am removing everyone now. And before I go, I'll read a few comments. I'll first thank Rajat Verma for the $5 super chat. Rajat Verma, really appreciate it. Rajat says, thanks for providing a very approachable platform for having interesting discussions. We all benefit from your sound arguments. Much appreciated, Rajat, and I'm glad to be of help. अगर मेरे कंटेंट से किसी को मदद मिलती है अपने आर्ग्यूमेंट्स को शार्पन करने में, तो मैं अपने काम को सक्सेसफुल मानता हूँ, क्योंकि दैट इज़ द गोल इज़ टू एनेबल पीपल टू टॉक अबाउट सेक्युलर थिंकिंग बेटर। क्योंकि रिलीजियस लोग अक्सर एक आर्ग्यूमेंट में 20 कद्दू भर के फेंक देते हैं हमारे ऊपर, और हम उसके अंदर से कद्दू निकाल निकाल के गिनते रहते हैं। इसको इट्स कॉल्ड गेश गैलप। सो अगर मैं छोटे छोटे डोजेस में आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर पाता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप उनसे बात कर पाएँ बेटर, तो good, great. And again, thank you for the support. Much appreciated it. Just like Rajat, you can also support my work by clicking the join button below and becoming a member. If you become a member, you will be paying 159 rupees every month. If you decide not to become a member, you can simply send a super chat like Rajat and other people have sent today. If you want to support my work on Patreon, you can do so at patreon.com/Vimoh. There is a monthly plan and an annual plan, and you can pledge an amount of your choice. If you don't want to pledge an amount of your choice on a monthly or annual basis, you can simply make a one-time donation at vimo.stck.me, which is my blog. There is a support button there. Just choose an amount of your choice and make a one-time donation. And if you want, you can also use UPI. The handle is Vimo at UPI. Very simple. Vimo at UPI पे आप कोई भी अमाउंट अपने चॉइस का भेज सकते हैं. Whatever you contribute helps me run this channel, helps me buy books, buy software, and pay my electricity bill. And खाना वगैरह जिंदा रहने के लिए जो जो खर्च होते हैं उसी के लिए इस्तेमाल होता है. This is my full-time work. So whatever you send helps me do my work and live my life. So thanks in advance to everyone who wants to do this. If you can't, if you are unable to pay, it's perfectly all right. टाइम खराब चल रहा है, इकोनॉमी बुरी है. अगर आपके पास इतना बैंडविड्थ नहीं है फाइनेंशियल कि आप पैसे भेज सकें, माय कंटेंट इज गोइंग टू कंटिन्यू टू बी फ्री. My short videos are available at youtube.com/Vimoh.
हर रोज एक शॉर्ट आता है और हफ्ते 2 हफ्ते में एक लंबा वीडियो भी डाल देता हूँ. सो इट्स ऑल अबाउट द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग, हाउ टू थिंक, critical thinking, that sort of thing. And if you want to listen to the audio episodes of this podcast, you can do so at www.vimoh.in. वहाँ पे आपको इस पॉडकास्ट के सारे ऑडियो एपिसोड्स मिलेंगे और ऑडियो एपिसोड्स के साथ साथ लिंक्स मिलेंगे यहाँ पे आप जैसे Spotify, Google Podcast, Ghana.com, Apple Podcast, JioSaavn, etc. I don't know why the order has changed. Something is clicked in my brain and the order has changed permanently. I don't know why. But yeah, that is all. Also, wait. It's 11:30. You have half an hour for a discount, by the way. If you go to kadakmerch.com/VimohLive, I should have announced this in the beginning of the episode, but the delay kind of caused me to forget. But kadakmerch.com/VimohLive पे जो t-shirts, hoodies और mugs हैं, उनके ऊपर flat 100 rupees का discount है for the next half an hour. Midnight पे खत्म हो जाएगा. So if you go to kadakmerch.com/VimohLive, you can get a discounted. You can buy something at a 100 rupee discount right now. So if you want to do that, you can. There's a t-shirt called Sabka Malik Fake Hai, and there's a t-shirt called Words Are Weapons, and another one called Woke Sabha is in session. There is a mug also with Words Are Weapons. I don't know if you will like it, but go to the store and check it out. If you don't want to go to the store, on this channel there is a store tab. Just click on it and you will see all the products. The discount is available for only the next half an hour. So if you're listening to the audio version of this discount will be over by then. Sorry. And yeah, that is it for today. I will see you all on next Wednesday at 9:30 p.m. Until then, I hope you have a great few days and what else? Be safe, I suppose. Be safe and keep thinking. I really need a Science is Dope का वीडियो जब खत्म होता है, he says ना, and remember, science is dope. मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है. So remember, science is Pope. Good night.